जल जीवन मिशन। भाइयों और बहनों, भारत के विकास में पानी की कमी बाधा न बने, इसके लिए काम करते रहना हम सभी का दायित्व है। सबका प्रयास बहुत आवश्यक है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी जवाबदेह हैं। पानी की कमी की वजह से हमारे बच्चे अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में न लगा पाए, उनका जीवन पानी की किल्लत से निपटने में ही बीत जाए, ये हम नहीं होने दे सकते। इसके लिए हमें युद्ध स्तर पर अपना काम जारी रखना होगा। आजादी के 75 साल, बहुत समय बीत गया। अब हमें बहुत तेजी करनी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि देश के किसी भी हिस्से में टैंकरों या ट्रेनों से पानी पहुंचाने की फिर नौबत न आए। हर घर जल, जल जीवन मिशन। To know that the Big Four and us a different story. The data is undeniable, and consequences for all countries could be the same. The last decade was the hottest ever recorded in India. The need of the hour is to act now. म्यूट कर दिया, म्यूट करो करेंगे। टैंकर और ट्रेन से पीने का पानी पहुंचाना हुआ बंद। 21वीं सदी का प्रारंभ, गुजरात में आया विनाशकारी भूकंप। 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु, 1.5 लाख से अधिक घायल, 3.5 लाख से अधिक घर हुए प्रभावित। भूकंप के अलावा भी गुजरात के सामने थी बड़ी चुनौतियां। प्रमुख था जल संकट। हर साल 3 से 5 फीट गिर रहा था भूजल स्तर। सूखे की मार, दूषित पानी और उनसे होती बीमारियां, बढ़ता खेती का खर्च और वीरान होते खेत। अने हूँ गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री तरीके ना मारा। मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लिया संकल्प, पानी की कमी को मिटाना और गुजरात को समृद्ध बनाना, और दिया गुजरात को वाटर सिक्योरिटी का एक विजन। पूरी की बहुप्रतीक्षित सरदार सरोवर परियोजना। पानी की समस्या को हल करने के लिए शुरू की सुजलाम सुफलाम योजना। विश्व का सबसे विस्तृत कैनाल नेटवर्क बनाया। 21 सुजलाम सुफलाम कैनाल 21 नदियों ने जोड़े नारे। दिया बढ़ावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आर्टिफिशियल रिचार्ज, माइक्रो इरिगेशन और सोलर पंप को। लाखों चेक डैम और खेत तालाबों का निर्माण। भूजल स्तर हुआ 3 मीटर तक ऊंचा। कृषि क्षेत्र में दिया पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मंत्र। गुजरात में कृषि विकास दर 10% से अधिक। सूखे कच्छ और सौराष्ट्र तक जल पहुंचाने शुरू हुई पानी पहुंचाने की योजना। मुख्यमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे विशाल वाटर ग्रिड का जाल बिछाया। उत्तर गुजरात के फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाया नल से जल।
इस विजन से कि महिलाओं को पानी ढोने की समस्या से मिले मुक्ति, बने वो खुशहाल और सशक्त, और स्थापित किया वास्मो, वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हर गांव में बनाया पानी समिति, महिलाओं के हाथों में सौंप दी पानी की बागडोर, और पहुंचाया स्वच्छ जल हर छोर। ગામો ગામ આ બહેનોની પાણી સમિતિઓ બની અને આજે 5 વર્ષ થયા પાણીનો આખે આખો વહીવટ અમારી માતાઓ બહેનો છે। गांव गांव पेयजल का स्वप्न हुआ साकार। You have unmuted. Good morning, sir. K.S. Suk, sir. Hello. Are you there, sir? Hello. K.S. Suk, sir. हेलो। Hello. हाँ जी, नमस्कार। आवाज आ Namaskar, रही sir. Okay, sir.
जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार। आज के पोस्ट बजट वेबिनार जिसका थीम है लीविंग नो सिटीजन बिहाइंड, उसके ब्रेकआउट सेशन में उपस्थित मंत्रीगण, राज्यों एवं केंद्र के अधिकारीगण, हमारे साथ जुड़े हुए सभी पंचायतों से, पानी समितियों से मेंबर, हमारे रिसोर्स सेंटर्स के मेंबर्स, सभी प्रोफेशनल्स जो कि निजी क्षेत्र में पानी और सैनिटेशन पे काम कर रहे हैं, सभी साथियों को नमस्कार, वेलकम। आज के इस सेशन में हम हर घर जल और हर घर उज्ज्वला पे चर्चा करेंगे और इसकी शुरुआत के लिए मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री साहब श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी को, राज्य मंत्री श्री विशेश्वर टुडू जी को, पेट्रोलियम नेचुरल गैस के राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी को, और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत साहब को कि वो अपने विचार व्यक्त करें और ख़ास तौर पर हर घर जल के बारे में और बजट के साथ उसकी क्या हम इस साल में गतिविधि देखना चाहते हैं, उसके बारे में सबके साथ अपने विचार रखें। धन्यवाद सचिव महोदया। बजट के पश्चात बजट का त्वरित गति से और सही तरीके से उपयोग किस तरह से हो, बजट केवल सरकार का विषय न रहे बल्कि सारे स्टेक होल्डर्स, सब लोग समेकित प्रयास उसे लेकर के करें, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स हों, ताकि काम में गति लाई जा सके और साथ ही साथ जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस भाव को लेकर के योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, उन योजनाओं को शीघ्रता के साथ में और प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके, गुणवत्ता के आधार पर पूरा किया जा सके। इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आयोजित इस वेबिनार में जो बजट के पश्चात कोई भी नागरिक पीछे न रहे, लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड, इस संकल्पना के साथ में जो आज आयोजित की जा रही है, उसमें उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे साथी आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, आदरणीय विश्वेश्वर टुडू जी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री आदरणीय रामेश्वर तेली जी, इस वेबिनार में जुड़े हुए भारत सरकार के मंत्रालयों के, राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारीगण, कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग
और इस जल जीवन मिशन के साथ में जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स का मैं बहुत सारा स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की यह संकल्पना कि राष्ट्र के विकास के क्रम में कोई भी गांव की कोई भी बस्ती और बस्ती में रहने वाला कोई भी व्यक्ति विकास की इस श्रृंखला में पीछे न छूट जाए और विकास समग्र रूप से विकास हो, केवल कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के बजाय सामान्य मानवीय और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से योजनाओं का निर्माण हो और उनका इम्प्लीमेंटेशन हो। इस दर्शन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 साल के अपने कालखंड में बहुत प्रभावी रूप से धरातल पर उतारा है। सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जितनी भी योजनाएं प्रारंभ की गई, जनधन से लेकर के हर एक व्यक्ति को आवास मिले, हर एक घर में शौचालय हो, हर एक घर में बिजली का कनेक्शन हो, हर घर में बैंक का खाता हो, हर गांव में इंटरनेट की सुविधा हो, हर गांव तक सड़क पहुंचे और इसी के क्रम में हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, उसके लिए जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया था। जल जीवन मिशन की जब संकल्पना की गई थी और 2019 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के ये उद्घोष किया था कि हम 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण आवास तक पीने का पानी पहुंचाने के लक्ष्य के साथ 3,60,000 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान से हम इस योजना का संचालन करेंगे। उस समय जिस तरह के आंकड़े माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उस आइकॉनिक स्पीच में दिखाए थे कि देश में 70 साल तक केंद्र की सरकारों के सहयोग, राज्यों की सरकारों के प्रयास और स्थानीय सरकारों के भी प्रयासों के बावजूद भी देश के 19 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण आवासों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक ही पीने का पानी पहुंचना संभव हो पाया था। यदि मैं आंकड़ों को प्रतिशत में देखूं तो देश की ग्रामीण हाउस होल्ड्स में से केवल 17% घरों तक ही पीने का पानी 70 साल के समेकित प्रयास के बाद पहुंचा था। निश्चित ही उस समय लगता था कि बहुत बड़ा लक्ष्य और बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो काम 70 साल में हुआ था उससे 4 गुना से ज़्यादा काम करने के लिए केवल 4.5 साल का समय हमारे सामने था। चुनौती बड़ी थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनकी ड्राइविंग फोर्स के चलते हमने बहुत तेज गति के साथ में काम प्रारंभ किया। हम जानते हैं कि जिस तरह से भारत की संविधान व्यवस्था के अनुरूप जल राज्यों का विषय है और राज्यों का विषय होने के नाते जो है उसकी प्लानिंग से लेकर के इम्प्लीमेंटेशन से लेकर के ऑगमेंटेशन से लेकर के ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट सभी चीज़ें जो है वो राज्य सरकारों के अधीन थी। और भारत ऐसा विस्तृत देश होने के नाते, अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियां होने के नाते भारत में चुनौती और भी बड़ी थी, क्योंकि हर एक राज्य की अपनी अलग प्रिपेयर्डनेस का स्तर था, हर एक राज्य का अपना जो है वाटर अवेलेबिलिटी का स्तर था, हर एक राज्य के अपने अपने अपनी प्रकृति के चैलेंजेस थे। लेकिन इन सब का अध्ययन करके रीजनल कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद में हमने जिस तरह से एक गाइडलाइन पूरे देश के सामने रखी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन से जब गाइडलाइन इशू किया था 2019 में, मैं मानता हूं कि वो तिथि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेट थी, क्योंकि उसी के बाद में प्रैक्टिकली देश में जल जीवन मिशन पर काम प्रारंभ हुआ। लेकिन 25 दिसंबर से लेकर के 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 25 मार्च को कंप्लीट लॉकडाउन, कोरोना की इस आपदा के आने के कारण से जब पूरा विश्व ठहर गया था, पूरा देश भी एक बार ठहर गया था, तब ऐसा लगता था और शायद सभी लोग इस बात की कल्पना करते थे कि जल जीवन मिशन अब जिस अपेक्षा के साथ में प्रारंभ किया गया था और जो लक्ष्य इसके लिए तय किया गया था कि हम 4 साल में 2024 तक इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, शायद वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की ड्राइविंग फोर्स, उनके सतत मार्गदर्शन और देश के जल शक्ति मंत्रालय और विभिन्न राज्यों के इंटीग्रेटेड एफर्ट्स के कारण से मैं आज खुशी के साथ में कह सकता हूं कि 2 साल तक कमोबेश, मार्च 2020 से लेकर के मार्च 2022 आने वाला है, इसमें कोरोना के 3 दौर आने के बावजूद और लगातार व्यवधान आने के बावजूद भी मैं गर्व के साथ में ये कह सकता हूं, प्रसन्नता के साथ में ये कह सकता हूं कि जो आंकड़ा प्रारंभ के समय 17% था,
आज लगभग 47% से ज़्यादा घरों तक हम पीने का पानी पहुंचाने में कामयाब हुए। केवल 3% घरों तक और पहुंचने के बाद हम देश की आधी आबादी को पीने का पानी उनके घर में मिले, ये सुनिश्चित करने में कामयाब होंगे। ये एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करूं तो जो 19 करोड़ आवास में से 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचता था, आज हमने 5 करोड़ 81 लाख घरों को नया पीने का पानी का कनेक्शन के साथ में जोड़ा है और देश की 9 करोड़ से ज़्यादा आबादी को पीने का पानी आज मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अभी अपने प्रारंभिक वक्तव्य में, अपने उद्बोधन में कहा कि इस साल हमने 4 करोड़ घरों को नए जोड़ने का लक्ष्य रखा है और मैं ये मानता हूं कि ये 4 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आने वाले वर्षों में हम 2024 के अंत तक निश्चित रूप से इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। देश की विभिन्न तरह की भौगोलिक परिस्थितियों की चर्चा मैंने की। लाहौल स्पीति घाटी के बर्फीले दुर्गम प्रदेश, जहां साल में 8-9 महीने तक बर्फ रहती है, वहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से पाइप पहुंचा करके कनेक्टिविटी देना हो, या अरुणाचल के जंगलों में जहां पहाड़ पर बसे हुए लोगों के पिको के घर तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए हाथियों से पाइप ले जाना हो, या अपने कंधों पर उठा करके किलोमीटर्स तक पाइप लेकर के जाना हो। जो सुदूर रेगिस्तान में, राजस्थान में, जहां तपते हुए लू में, तपती हुई दोपहरी में भी जमीन के अंदर पानी ले जाने के लिए पाइपलाइंस डालना हो, इन सब कामों को बखूबी पिछले 2 साल में अंजाम दिया गया है और उसी के चलते आज जिस तरह से हमने प्रगति की है और इन सारी चुनौतियों के बावजूद राज्यों के साथ में मिलकर के हम इस चुनौतियों को पार करते हुए इस लक्ष्य तक को हासिल करने के लिए आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। निश्चित ही हम सबका उत्साह उसके कारण से और हम सबका इस लक्ष्य को प्राप्त करने का हौसला जो है वो और अधिक बढ़ा है। हम जानते हैं कि पीने का पानी लाने की जिम्मेदारी परिवार में माताओं बहनों की होती है और मैं तो पश्चिमी राजस्थान से आता हूं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह का परिश्रम करने के लिए माताएं बहनें अभिशप्त होती हैं। किलोमीटर्स तक रोज उनको पीने का पानी लेने के लिए पैदल अपने सर पर मटका रख करके जाना होता है और उस अभिशाप से मुक्ति दिलाने का काम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ये केवल पीने का पानी पहुंचाने का मात्र का कार्यक्रम नहीं है। पानी जब घर में पहुंचता है, जब हम शौचालय के बाहर घर तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे थे और देश के हर घर तक स्वच्छता और शौचालय पहुंचे इस लक्ष्य के साथ में काम कर रहे थे, तब शायद किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि इसके हिडन बेनिफिट्स क्या होंगे। और आज जब पूरी दुनिया की एजेंसी, चाहे बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, वर्ल्ड बैंक है, सभी लोग जब इस बात की चर्चा करते हैं और अपनी स्टडीज के आधार पर इन आंकड़ों को दुनिया के सामने, देश के सामने साझा करते हैं कि उसके कारण से हमारे हेल्थ बेनिफिट्स किस तरह से हुए, किस तरह से हर एक हाउस होल्ड का 50,000 रुपया प्रति वर्ष जो उनका खर्च हेल्थ एक्सपेंडिचर के रूप में होता था, उसमें कमी आई है। लाखों लोग जो स्वच्छता न होने के कारण से अपने जिनका जीवन समाप्त हो जाता था, उनको बचाने में कामयाबी मिली है। ठीक उसी तरह से जल जीवन मिशन की सफलता के बाद में नेशनल हेल्थ इंडेक्स में निश्चित रूप से जो है इजाफा होगा और साथ ही साथ में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारे माताओं बहनों और परिवार के लोगों में होगी, जो पीने के पानी की गुणवत्ता न होने के कारण से एक बड़ी चुनौती के रूप में उनके सामने होती है। एक परिवार में कल्पना कीजिए कि माँ जानते हुए भी कि जिस सोर्स से वो पानी लेकर के आ रही है वो पानी दूषित है, आर्सेनिक से भरा हुआ है, आयरन है, फ्लोराइड है और जिसका एक लाइफ टाइम इम्पैक्ट उसके परिवारजनों पर, उसके बच्चों पर होने वाला है, ये जानते हुए भी वो पानी अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को पिलाने के लिए अभिशप्त है। इससे मुक्ति मिलना उस महिला के लिए, उस परिवार के लिए कितना बड़ा परिवर्तन होगा, इसकी कल्पना भी शायद हम यहाँ बैठ करके नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा पूरा जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में हम इस जल जीवन मिशन के माध्यम से काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी चर्चा की आकांक्षी जिलों की, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह की चुनौती थी और देश के ये ऐसे जिले जो अपने अपने प्रदेशों में भी सबसे ज्यादा पिछड़े हुए थे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर, पैरामीटर्स पर, आज मैं प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि उन जिलों में आज 1,36,00,000 परिवारों को नए कनेक्शंस दिए जा चुके हैं और कुछ एक जिले तो ऐसे हैं जो आज स्टेट एवरेज या नेशनल एवरेज से भी जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। निश्चित ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। JEAS जापानीज इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित गांवों के में भी ऐसे 5 राज्यों के 61 जिलों के गांव में हमने जो 2.6% घर
केवल 8 लाख घरों तक जहां कनेक्शंस थे उसको बढ़ा करके हम 1,23,00,000 घरों को पीने के पानी की सुविधा, यानी लगभग 41% घरों को ऐसे इफेक्टेड एरिया में भी पीने के पानी की सुविधा देने में कामयाब हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस मिशन की घोषणा की थी और उसके बाद जब पहली बार इसमें अपना मार्गदर्शन दिया था, तब अपने गुजरात के मुख्यमंत्री काल के अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा था कि ये योजनाएं इंजीनियरिंग मार्वल न बने और इनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो, इसके लिए ये आवश्यक है कि हम इसमें समुदाय की भागीदारी जो है, सेंस ऑफ ओनरशिप गांव के लोगों में आए और पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट के आधार पर हम प्रिंसिपल पर इस पर काम करें, और हमने इस दिशा में काम किया। आज मैं प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि जो गांव, देश भर के गांव हैं 6 लाख गांव, उनमें से 3,82,000 गांवों की ऐसी होलिस्टिक स्कीम्स जो हैं गांव की समितियों के साथ में बैठ करके बनाई गई है, और लगभग 4,70,000 गांवों में ऐसी पानी समितियों का निर्माण किया जा चुका है, जो आज अपने गांव में होने वाली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जल जीवन मिशन की गतिविधियों के से लेकर के उसके संचालन परिचालन तक के लिए आपस में बैठ करके बातचीत करके और अपने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मार्गदर्शन दिया था तब 2-3 विषयों पर उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ में हम सबको फोकस करने के लिए कहा था। पहला तो यह कि 3 विषयों को हमको देखना है, एक क्वालिटी, दूसरा कंटिन्यूटी और तीसरा सस्टेनेबिलिटी। जब क्वालिटी की चर्चा आती है तो निश्चित रूप से वाटर क्वालिटी की बात पहले मैं करूं कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्वालिटी की बात करें, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी जिस बात को इंगित किया कि हम इस जो है ग्रिड जो हम पानी के लिए बनाते हैं, चाहे वो विद इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो या जो हमारा आउटसाइड से जो मल्टी विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए उसकी क्वालिटी पर हम सबको बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। और आज जब हम सब स्टेक होल्डर साथ बैठे हैं तब निश्चित ही इसके बारे में सभी अपने बात करने वाले लोग अपने अपने अनुभव के आधार पर कि किस तरह से हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को की दृष्टि से क्वालिटी को मैनेज करेंगे, इस दिशा में काम कर जो है क्या से और अधिक बेहतर काम किया जा सकता है, इसके बारे में आप टिप्पणी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ में क्वालिटी का जो दूसरा एस्पेक्ट है कि पीने के पानी की गुणवत्ता, आज भारत में पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर के, उसकी जांच को लेकर के किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था। केवल जो है आरओ सिस्टम, एडवर्टीजमेंट देख करके लोग अपने घर में आरओ लगा रहे हैं, लेकिन आरओ लगाने के बाद में उस आरओ में से कैसा पानी निकल रहा है, आने के बाद में भी उस पानी को जो है उसकी एएमसी ने एक बार रिपेयर किया, उसके बाद में क्या उसमें से क्वालिटी का पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको टेस्ट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने देश में वाटर क्वालिटी टेस्टिंग का पूरा एक कंप्लीट रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सेटअप तैयार करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। आज देश में 2000 से ज्यादा एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज जिला स्तर पर और कुछ राज्यों में ब्लॉक स्तर पर काम कर रही हैं। लेकिन उसके आगे बढ़ करके भी हमने महिलाओं को हर एक गांव में 5 महिलाओं को ट्रेनिंग करके लगभग ऐसी 6-8-9 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग करके और उनको फील्ड टेस्टिंग किट्स प्रोवाइड किए, जिसके आधार पर वो जो सामान्य नॉर्मल पैरामीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है उन सबको अपने आप अपने हाथ से असेस कर सकती हैं। और न केवल असेस करें अपितु ये सारा डेटाबेस एक रिपोजिटरी में एक ही जगह कलेक्टेड रहे, ताकि उस क्षेत्र में, उस गांव में, उस जिले में पीने के पानी की गुणवत्ता में मौसम के आधार पर यदि कोई परिवर्तन होते हैं उनको ट्रैक किया जा सके, उनको देखा जा सके और लंबे समय तक गुणवत्ता का पानी लोगों को मिलता रहे, इसको इंश्योर किया जा सके। यदि कहीं किसी कारण से कोई चुनौती आई है तो उस चुनौती का भी शीघ्र समाधान किया जा सके, उन ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जा सके, एड्रेस किया जा सके, इस दृष्टिकोण से भी प्रावधान हमने किया है। और जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली एक पूरी हमने जो है वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंडेक्स हमने डेवलप करने की दिशा में हमने अपना कदम आगे बढ़ाया है। इस तरह से पानी, पीने के पानी की क्वालिटी बढ़ने के कारण से, सुधरने के कारण से एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी सभी लोगों में जनरेट होगा और साथ ही साथ में उसके कारण से हमारे जो है नेशनल हेल्थ इंडेक्स में भी, जैसा मैंने कहा, उसका बेनिफिट होगा। आज गांव में आंगनवाड़ियों में और विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लेकर को गुणवत्ता का पानी मिले,
इसको लेकर के भी माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता थी। और जब 2020 के 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने देश के हर एक विद्यालय और आंगनवाड़ी तक पीने का पानी गुणवत्ता का पहुंचे, इस लक्ष्य के साथ में जो योजना प्रारंभ की थी, आज 82% तक स्कूल्स और 77% से ज्यादा आंगनवाड़ियां जो हैं देश की गुणवत्ता के पानी के नेटवर्क से जोड़ी जा चुकी है। और अब चूंकि कोरोना की आपदा, कोरोना का दौर समाप्त हुआ है, बच्चे वापस स्कूलों में लौटेंगे, आंगनवाड़ियों में बच्चों का एकत्रीकरण होगा और उस समय में ये पीने का गुणवत्ता का पानी उन्हें सुनिश्चित मिल सकेगा। निश्चित ही उसके कारण से एक बहुत बड़ा बदलाव हम उनके स्वास्थ्य में देख पाएंगे। आज जैसा प्रधानमंत्री जी अनेक बार ये चर्चा करते हैं, आज भी उन्होंने इंगित किया कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन सब चीजों को बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो डैशबोर्ड जिस तरह से बनाया है, उसमें उस डैशबोर्ड के माध्यम से निरंतर कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के साथ साथ में टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने पानी की क्वालिटी के मैनेजमेंट के लिए भी इस तरह से के IoT बेस सेंसर बेस जो है वो डिवाइसेस डेवलप किए हैं, जिनको हम अभी पायलट के रूप में 100 स्थानों पर लगभग टेस्ट करके देख रहे हैं, ताकि ऑनलाइन हमारे पास में और रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा उसका क्वालिटी का, क्वांटिटी का और रेगुलरिटी को मॉनिटर किया जा सके। इसे आगे किस तरह से और एक्सपेंड किया जा सकता है, इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। मोबाइल जो है ऐप हमने लॉन्च किया है जल जीवन मिशन का, ताकि ऐप पर जुड़ी हुई जानकारी के आधार पर हर एक व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सके। देखिए, जल जीवन मिशन केवल पाइप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और पीने का पानी पहुंचाने का कार्यक्रम नहीं है। आज 3,60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो इसमें हो रहा है, उस इन्वेस्टमेंट में पाइप मैन्युफैक्चरर्स, एंसिलरी मैन्युफैक्चरर्स, सीमेंट जो है कंपनीज, स्टील कंपनीज, इन सब से लेकर के जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में जो लोगों की सहभागिता होती है, प्लम्बर्स हैं, हमारे मोटर मैकेनिक हैं, हमारे फिटर्स हैं, हमारे इलेक्ट्रीशियंस हैं, हमारे मोटर और पंप्स को रिपेयर करने वाले लोग हैं, उन सबको भी बहुत बड़ी संख्या में रोजगार इसके कारण से सृजित हो रहा है। ऐसे लोगों को ट्रेनिंग करना और ऐसे लोगों को जो है स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग करके उनको जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट हो, इस दिशा में भी हमने काम जो है प्रभावी रूप से पूरे देश में प्रारंभ किया है। 15th फाइनेंस कमीशन ने भी जब अपनी अनुशंसा की तो उसमें उन्होंने अपनी एनुअल ग्रांट का 30% ड्रिंक वाटर और 30% सैनिटेशन रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए टाई अप ग्रांट के रूप में देना ऐसा प्रस्तावित किया है। और इसके कारण से 1,42,000 करोड़ रुपया जो है इस तरह का सशर्त अनुदान जो है टाइड अप ग्रांट पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से खर्च होगी। मैं राज्य सरकारों के जितने प्रतिनिधि यहाँ इस वेबिनार में उपस्थित हैं, मैं उन सबसे आग्रह करूंगा कि हमें एक अभी कन्वर्जेंस पे सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि जल जीवन मिशन केवल पीने का पानी पहुंचाने तक का, जैसा मैंने कहा, कार्यक्रम नहीं है। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए सोर्सेज के स्टेबलाइजेशन के लिए, उनको सस्टेनेबल बनाने के लिए हम किस तरह की एक्टिविटीज को करें, और उसके लिए ये जो पैसा, जो नरेगा का पैसा, MG नरेगा का पैसा हमारे पास में अवेलेबल है, क्योंकि वो भी, उसका भी पैसा NRM रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए टाइड अप है, एक बहुत बड़ा क्वांटम 60% के आसपास, और 15th फाइनेंस कमीशन का भी पैसा उसके लिए टाइड अप है। इन दोनों का उपयोग करते हुए हम सोर्सेज के स्टेबलाइजेशन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मेजॉरिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स जो है वो अंडरग्राउंड वाटर पर है, और जिस तरह से बहुत सारे प्रदेशों में अंडरग्राउंड वाटर जो है वो लगातार डिप्लीट हो रहा है, तो हम सोर्स स्टेबलाइजेशन के लिए इन दोनों स्कीम्स के माध्यम से आने वाले पैसे को, उसके साथ में 7 प्रदेशों में जो अटल भूजल योजना चल रही है उसके पैसे को, इन सब को डाउटल करके किस तरह से सोर्सेज स्टेबलाइजेशन पे प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं, इसकी दिशा में हम सबको विचार करने को, चिंतन करने की आवश्यकता है। पीने का पानी निरंतर मिले, लेकिन जो पीने के पानी घर में उपयोग के बाद में हमारे किचन से, हमारे बैथिंग स्पेस से जो पानी निकलता है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमने 100% जो है सैनिटेशन सफलता के साथ में पूरा किया है, और उसके कारण से आज मैं ये कह सकता हूं कि जो है हर घर में टॉयलेट है, टॉयलेट के साथ में ट्विन पिट या सोक पिट बना हुआ है, और उसके होते हुए आज जो है ब्लैक वाटर जो है वो तो वहीं पे अब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन जो ग्रे वाटर निकलता है उस ग्रे वाटर को बहुत सामान्य ट्रीटमेंट के आदत के माध्यम से तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। वो ट्रीटेड पानी बड़े गांवों में
जो है उस ट्रीटेड पानी को खेती के लिए किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, यदि कहीं अपॉर्चुनिटी है तो उसको बाद में उसको इंडस्ट्री के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है, और इन दोनों उपयोग के माध्यम से गांव के लिए, एक पंचायत के लिए हमेशा के लिए एक रेवेन्यू अर्निंग मॉडल कैसे खड़ा किया जा सकता है। और ये दोनों ही अगर न हो तो उस पानी को कम से कम किस तरह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए इफेक्टिवली उपयोग किया जा सकता है, इस दिशा में भी हम सबको विचार करना चाहिए और बहुत तेज गति से काम करने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने कहा, इसके लिए भी नरेगा का पैसा, इसके लिए भी जो 15 फाइनेंस कमीशन का सैनिटेशन का पैसा है, स्वच्छ भारत मिशन की जो ग्रांट ओडीएफ प्लस विलेजेस में हमको के लिए हमको मिल रही है, और उस सबको टॉप अप ग्रांट के रूप में जल जीवन मिशन से भी कुछ पैसा इसमें दिया जा सकता है। तो इन सब जो है रिसोर्सेज को डॉवटेल करके कन्वर्ज करके कैसे हम और इफेक्टिव मॉडल बना सकते हैं। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा अभी कहा कि गांवों के बीच में कंपटीशन होना चाहिए, हमारे इस जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ एक कंपटीशन भी गांव गांव में खड़ा हो, और ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो है सोर्स स्टेबलाइजेशन, इफेक्टिव डिलीवरी और ग्रे वाटर मैनेजमेंट, इन तीनों पे हम मिलकर के कैसे काम कर सकते हैं, इसका एक कंपटीशन गांव में खड़ा हो, इस दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है। मित्रों, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के प्रारंभ में भी कहा था कि इसमें कहीं भी धन की कमी नहीं है। पिछले साल भी हमने जितना बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एलोकेट किया था, मैं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि क्योंकि यहाँ उपस्थित है, मैं कहूंगा कि आज भी अगर मैं एब्जॉर्प्शन की दृष्टि से देखूं तो जितना बजट जो एलोकेट हुआ था उसका एडिकेट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया। हमको उसकी भी गति बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक हम स्पेसिफाइड विंडो में हम काम कर रहे हैं, 2024 तक हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है। तो इस संकल्प के साथ में राज्य सरकारें अपने बजटरी एलोकेशन को भी इस दिशा से, इस दृष्टि से सोचते हुए कि मैचिंग ग्रांट जो है उन्हें देनी है, जो हमारे हिली स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स हैं, उनको 10% और बाकी सारे स्टेट्स को जो है 50% ग्रांट देनी है। इस ग्रांट का प्रोविजन हम अपने बजट्स में, अपने स्टेट्स के बजट में करें, और ताकि हम जो है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में ये जो इनिशिएटिव लिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इस इनिशिएटिव को हम जो है ज़्यादा तेजी के साथ में पूरा कर सकें। मैं अंत में ये कहूँगा कि सभी स्टेक होल्डर्स जो इसके साथ में जुड़े, चाहे गांव से जुड़े हुए प्रतिनिधि भी होंगे, जो हमारे इस मिशन के साथ में जो कंपोनेंट सप्लाई करने वाले लोग भी होंगे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स भी इसके साथ में जुड़े हैं, और इम्प्लीमेंट करने की प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी स्टेट्स के जिन अधिकारियों ऑफिशियल्स के पास में है, वो लोग भी आज इस वेबिनार में जुड़े हैं। हम सब लोग आज इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में कैसे इसको ज़्यादा इफेक्टिवली हम और ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजीज जो है वो आज हम सबके इस मंथन से निकले, और इस मंथन से जो नवनीत निकलेगा वो मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम को और अधिक गति करने के लिए एक लुब्रिकेंट के रूप में काम करेगा, और निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमारे साथ हमारे राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी भी शामिल हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो अपने विचार व्यक्त करें। प्रहलाद पटेल साहब, अपने आप को अनम्यूट करके आप अपनी बात रखें। भाई आ रही है आवाज? आपने फिर म्यूट कर दिया है प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, आप अपने आप को अनम्यूट करो, आपका म्यूटेड है। नहीं, अब आ गया क्या? अब आवाज? हाँ, अब आ रहा है, ठीक है। जी जी जी।
आदरणीय शेखावत जी, मेरे मित्र सहयोगी टुडू जी, रामेश्वर तेली जी, सभी सम्मानीय अधिकारीगण और इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स भाइयों बहनों, आदरणीय शेखावत जी ने विस्तार के साथ सारे बिंदुओं को रखा है। जो चीज़ें शेष लगती हैं वो मैं उनके आपके सामने रखता हूँ। हमारे जब भी आप पोर्टल पर जाएंगे तो जो हमारी सफलताएं हैं वो सफलताएं वास्तव में जिनका आंकड़ा आदरणीय शेखावत जी ने बताया है, अगर मैं जिलों की दृष्टि से कहूँ तो वो 100 जिले हैं, 1144 ब्लॉक हैं, 66,647 पंचायतें और 1,37,642 गांव हैं, जो 100% घरों तक पानी पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। जो राज्य हैं उसमें गोवा 2020 में जिसने लक्ष्य प्राप्त किया, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, हरियाणा ने 2021 में प्राप्त किया, दादरा नगर हवेली, पंजाब में 99% तक हम पहुँचे, बहुत जल्दी लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हिमाचल, गुजरात और बिहार 90% तक उनने लक्ष्य प्राप्त किया है, ऐसी सूचनाएं उनने दी हैं। लेकिन मैं जहाँ तक मैंने जिन राज्यों में प्रवास किया है, जो चुनौतियाँ मैं देखता हूँ, मैं बड़ी विनम्रता के साथ राज्य के लोगों से कहूँगा कि हम कुछ बातों का हमें समन्वय भी बिठाना पड़ेगा और तेज़ी के साथ में काम करना पड़ेगा, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मैं चाहूँगा कि जो भी डीपीआर बनाने की गति है राज्यों की, उसको तेज़ी के साथ में आगे बढ़ाना होगा। और जब कभी हम 100% के लक्ष्य की बात करते हैं तो थर्ड पार्टी असेसमेंट के बगैर मुझे लगता है कि हमें लक्ष्य घोषित करने से के बारे में सोचना चाहिए। जब 100% घरों तक पानी पहुंच जाए तो जो गुणवत्ता की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कही है और आदरणीय मंत्री जी ने भी कही है, इसका पुनरीक्षण करने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। जो ज़रूरतमंद श्रेणी की हमारे गांव हैं या ज़िले हैं, उनको स्रोतहीन गांव कह सकते हैं या सीमावर्ती गांव या SC ST या आकांक्षी जिले, जैसे राजस्थान का उल्लेख आदरणीय मंत्री जी ने किया है, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो कम से कम राज्य सरकारों की कार्यप्रणाली की प्राथमिकता की सूची में हो, ऐसा मैं उनसे आग्रह करूंगा। जो पुरानी वाटर सप्लाई को हमने जोड़ने की बात कही है, मेरा आग्रह होगा कि डीपीआर में इनकी मैपिंग ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पुरानी है और बाद में कभी भविष्य में 10 या 15 साल बाद हमको फिर से पूरे सिस्टम को रिनोवेट करना हो तो गांव के उस सिस्टम को मदद मिलेगी। इसलिए डीपीआर में उस पुराने सिस्टम की मैपिंग भी मैं मानता हूं कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ग्राम पंचायत अगर सिंगल विलेज स्कीम है तो वो शायद उसके पास ये तंत्र नहीं होगा, जो भविष्य में उसके लिए बड़ी कठिन चुनौती बन सकती है। जहाँ तक सवाल हिमालयन स्टेट्स का है या नॉर्थ ईस्ट का है, उसमें विस्तार से शेखावत जी ने कहा है, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर का उदाहरण दूंगा कि कहीं ना कहीं टेंडरिंग प्रक्रिया में युक्तिकरण की ज़रूरत है। और जब मैं श्रीनगर के प्रवास पर गया था, एक मामूली से परिवर्तन ने 7 दिन के भीतर टेंडरिंग प्रक्रिया को सीधे 17% से 78% पर पहुंचा दिया था। तो मुझे लगता है कि जो राज्य, और यही मंशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, संचालन के लिए जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसमें मैं बहुत कमी देखता हूँ। और मैं मानता हूँ कि पानी की गुणवत्ता हो या पानी समितियों का प्रशिक्षण, इन दोनों के ट्रेनिंग के बारे में हमारे पास में समय के पहले आंकड़े आने चाहिए कि अगर योजना पूरी हो उसके पहले पानी समितियों की ट्रेनिंग हो जाए, जो बहनें पानी को टेस्ट करेंगी, क्योंकि पाइप और पानी की गुणवत्ता की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस भाषण में कही है, तो मुझे लगता है हमें वो ज़रूर करना चाहिए। और अंत में एक प्लम्बर और फिटर की ट्रेनिंग की बात भी आती है, क्योंकि एक स्किल्ड मैन पावर गांव में चाहिए। इस ट्रेनिंग पर हमें फोकस रखना चाहिए, ये राज्य सरकारें सुनिश्चित करें, ऐसा मेरा आग्रह होगा। और इसलिए अंत में मैं यही कहूँगा कि पानी की गुणवत्ता को लेकर पंचायतों में जिस प्रकार की जागरूकता की बात आती है या विलेज एक्शन प्लान की बात आती है, वो एक फोकस एरिया हो। और मुझे लगता है कि अगर हम इस चर्चा में इनमें आने वाली और कमजोरियों को देख पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा झारखंड का और राजस्थान के जो 2 अनुभव हैं, या फिर मैं अभी पांडिचेरी गया था, तो इन बातों के आधार पर मैंने अपनी ये बात कही है। और मैं मानता हूँ कि मंत्रालय इस मामले में पूरी सजगता और तत्परता के साथ काम कर रहा है। डैशबोर्ड पर आप अपने स्टेट के या पंचायत के अपग्रेड होने के चीज़ों को देखकर एक बार सुझाव देने की भी कोशिश करेंगे। इस अपेक्षा के साथ मैं यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
और आप सभी का इस चर्चा में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। We will now hear the experts and other participants present in today's webinar. As we've already heard, the guidance given by the Honorable Prime Minister from time to time and in his address earlier today, and the detailed analysis of the situation and the efforts of the government as explained by the Honorable Minister and further elaborated by the Honorable Minister of State. We all know that the Government of India and indeed all the state and UT governments are committed to ensuring that every citizen of the country receives potable drinking water in their homes in a time-bound manner. This is taking place at a very large scale in the rural areas already, but as you also know, in the urban areas of the country as well, the Ministry of Housing and Urban Affairs is working with the state governments and with the urban local bodies towards the same ambition. The Amrut Scheme was launched in 500 cities in June 2015 and made provision for tap water connections to achieve universal coverage. It achieved an objective of providing 1.26 crore water tap connections already. And going beyond that, on the 1st of October last year, the Amrut 2.0 has already been launched. All the cities and towns are making efforts to become water secure and provide water tap connections to all households. The DPRs under preparation. Already projects worth over 19,000 crore have been identified and are at various stages of approval at the state level and will thereafter receive Government of India funding and other support. In the rural areas of the country, as has already been explained in some detail, the governments of the states, UTs, with the support and we assured the fullest support from the Government of India, have been working towards achieving 100% functional household tap connections. So not just ensuring quantity at a minimum level, but also quality, regularity, and with community participation. But most importantly, as we are now at almost halfway mark through, a large number of DPRs have been made, works have been contracted, awarded, under implementation. It is now critical to ensure that there are no gaps in implementation. We ensure the quality of the works, and we also ensure that there is enough quality material available, including pipes, for which there have been instances of price increases, and we would request all our manufacturers in the private sector, as well as the construction agencies which are working with the states on third-party assessments, on project management, and indeed the civil society representatives to work with all of us in partnership, as we've been doing, to make sure that what we take up and what we do going forward is of the highest quality. As has been already explained, we have received a budget this year for Har Ghar Jal for the rural areas of 60,000 crores. The corresponding state and UT shares will amount to about another 50,000 crores. It's also been explained that there is a 14,000 crore devolution under the 15th Finance Commission for water alone. And so we are looking to spending jointly, and the implementation, of course, as already stated, is being done by the states and union territories and being done remarkably well with a lot of enthusiasm. We are looking at spending perhaps, if we all work together and pull together, 125,000 crores in the coming year. We are fully charged up. We have all the technical guidance in place. We know that the states are also fully geared up and implementing, and we know that the private sector is also participating. This is a huge economic opportunity. It is also an employment opportunity during construction phase, during O&M phase, both for skilled and indeed even for unskilled persons who are receiving skilling even as we speak in the villages as plumbers, masons, electricians, etc. We want to understand today from the participants in this webinar
on how they see the progress of this mission, especially going forward, especially in the coming year, and if they have any suggestions that they would like to make to either the Government of India or to the state governments and local administrations for improving the pace of implementation, improving the quality of implementation, and ensuring that the ambitions of the budget are met. With that, I will request our first expert speaker, Mr. K. Ashok Kumar, is associated with the water sector for a long time. He is currently the head of the water and effluent treatment business in L&T. Mr. Ashok Kumar, we are waiting to hear your views. Thank you, ma'am. Honorable Minister Jal Shakti, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Honorable Minister of State, Patel ji, and all other senior dignitaries who have joined this session. Good morning. Thank you for giving me an opportunity to address the August gathering. It gives me immense pleasure to be part of this webinar themed Leaving No Citizen Behind. In line with the United Nations transformative promise to leave no one behind, Government of India has been implementing various welfare schemes and programs targeted at ensuring progress for all. The Ghar Nal Se Jal scheme is one such flagship scheme, which was rolled out on Independence Day 2019, and as L&T, we are extremely happy to be a partner playing our part in facilitating this ambitious scheme. The program has the potential to transform the lives of rural people substantially through water equity, access to safe potable drinking water, income generation opportunities, and community well-being. L&T's water and effluent treatment business provides complete solutions through its concept to commissioning capability extending to virtually every area of the water, irrigation, and wastewater spectrum, benefiting over millions of people in India and abroad. As per the Jal Jeevan Mission website, close to 50% rural households now have been functional tap connection, as against 17% households when the scheme was rolled out in 2019. The remaining 50% will be a bit more challenging to achieve, as most of the connections need to be taken from the source to the end user. Jal Jeevan Mission's plan to provide safe and adequate drinking water through individual household tap connections by 2024 is an ambitious one. We would like to put forth some suggestions for fast-tracking JJM projects. Encourage EPC turnkey projects on design, build, and operate basis, which will help in optimization of the schemes and aid in timely project completion. Larger multi-village schemes at the district level can be combined to facilitate speedy execution by large infrastructure companies. Clear categorization of projects with respect to size and stature of contractors to have a level playing field during bidding. This will also lead to healthy competition and allow the employer to choose best contractors for the projects. Single window clearance for right of way and land acquisition from various departments. Time-bound approval for designs and a proposal to avoid procedural delays. Introduction of incentives for early completion, which will encourage fast-track construction. 10% industry mobilization advance will help initial ramp-up of the projects. Partial completion may be allowed for projects delayed due to right-of-way, forest, and other clearances, which will help reduce the financial burden on contractors. Demand-driven water supply schemes can be leveraged to optimize water consumption. The father of our nation rightly said that the future of India lies in the villages. Through schemes like Ghar Nal Se Jal, we are taking a step closer to his vision of making our villages self-reliant and prosperous. This is a participative process where all of us have a role to play to ensure that our goals do not remain mere goals. Thank you. Jai Hind.
Thank you for those clear and succinct remarks. We have another expert with us today, Mr. Nicholas Osborne, who has a deep understanding of wash issues, especially for India. Mr. Osborne, please. Thank you, Madam. I hope you can hear me well. Honorable Shri Gajendra Singh Shekhawat, thank you. Minister of Jal Shakti, Honorable Shri Prahalad Singh Patel, State Minister of Jal Shakti, Mrs. Vinny Mahajan, Secretary, DDWS, Minister of Jal Shakti, and Shri Arun Baraka, Additional Secretary, Minister of Jal Shakti, all dignitaries who have joined this important conversation, Namaskar. I'm very pleased to represent UNICEF here. We have been a close partner to the Ministry of Jal Shakti during the implementation of the flagships, the Swachh Bharat mission and the Jal Jeevan mission. It's really an exciting time to work in water and sanitation sector in India these days, given how well prioritized is this sector in the development agenda under the lead of the government. This is in an unprecedented manner. When the Swachh Bharat mission was launched, it set a very audacious goal, which has helped accelerate progress towards universal access to sanitation beyond what people thought could be achieved in only 5 years' time. I'm here to say that the Jal Jeevan mission was initiated with a similarly daring vision. And I believe that with the right resources and prioritization, it can accomplish just as much, if not more. For the financial year 2022-2023, the Ministry of Finance has allocated 60,000 crores rupee to the Jal Jeevan mission, in addition to the 27,900 crores rupees through the 15th Finance Commission Fund, and to go directly to rural local bodies and Panchayat Tiraj institutions to be used for water and sanitation specific projects. Altogether, it's in the range of 1.25 lakhs crore rupees planned to be invested in order to achieve Har Ghar Jal. It really tells about the political commitment and the public engagement of the government for essential services. And this is globally outstanding. It really inspires other governments beyond the borders of India. And we can expect that this can be very impactful for vulnerable children and women in the country. For comparison, the 3 fiscal cycles since the launch of the Jal Jeevan mission total up to 67,000 crores rupees. And this has enabled to date to reach over 30% of rural households. This is 5.78 crores to be afforded with Tap Connect since the beginning of the mission, and bringing the total coverage to almost 47%. And now the funding for 2022-2023 is almost the sum of the 3 last years, and with no doubt, it will fast-track the work in place. So the Jal Jeevan mission has the potential to improve water security and minimize the time needed for women and girls to fetch water from long distances. And it has much better advantages than just this one. From a public health standpoint, safe drinking water is, as we know, very important, but it also allows to hygiene practices, including hand washing with soap, in homes, in schools. And we know that hand washing has shown to reduce the incidence of COVID-19 transmission significantly, as well as many other transmissible diseases by up to 40%. And this contributes to improve the nutrition status of children. Secondly, in an economy that is still trying to find its feet after the debilitating shocks dealt by the 3 waves of the COVID-19 pandemic, the Jal Jeevan mission has been providing employment opportunity in all corners of the country. It would be important to estimate this precisely. With the Ministry of Jal Shakti, UNICEF conducted a macroeconomic impact evaluation of the Swachh Bharat mission, the first phase, showing that to the minimum, 7.55 million full-time equivalent jobs were created. The Jal Jeevan mission brings certainly much more livelihood opportunities. Let's ensure that this benefits primarily to women and to the youth of the country. And the potential is huge. The Indian Sanitation Coalition estimated that the sanitation market alone is in the range of $30 to $60 billion. So that tells about the drive, how it can steer livelihood and economic growth in the country. However,
I'm also here to ask that we do not take these achievements lightly, particularly given the looming threat of climate change and its implication to India's most vulnerable population, children and marginalized communities in particular. There is strong evidence showing that India is perhaps the 7th most at-risk country out of 160 countries to climate changes. And the cost because of floods, droughts is huge for the country. And in addition, there are ongoing challenges in managing the liquid waste, which is generated. And currently, only about 70% of the wastewater generated in municipal area is released in the environment, untreated, and contaminates water. With this, there is the urgent need to improve the solid waste management through the Swachh Bharat Mission Phase 2, including in rural areas, to avoid further pollution. So going forward, we have to treat the Jal Jeevan mission as an opportunity to further promote the adaptation of communities towards the climate changes to become climate resilient. And this is to safeguard communities through technology systems, but also ensuring that communities and governments are able to quickly respond in the aftermath of shocks so that critical services are back in play in action quickly to avoid discontinuity as it could happen during the COVID-19 pandemic. Global data really suggests that a greater investment in adaptations has a strong return on investment, up to 5 times the cost. Any rupee invested in climate change adaptations allows to save 5 rupees. So moving forward to assure that the Jal Jeevan mission remains adaptive, and some suggestions, well, it's to continue this acceleration to reach the remaining 53% households in rural India, and remembering that the last mile, the last 20% are harder to reach and will cost probably, the cost will be more important for the last mile. Also, we heard that very important flag, it's all these capacity enhancements required reaching the GPs to ensure operation and maintenance of the infrastructure. We have this investment, but at the end, if they are not properly managed, and this requires all our collective efforts, and also to further professionalize the workforce which manages this water supply and sanitation infrastructure. It's also to continue to prioritize not only communities, but also schools and Anganwadi centers in the nation. There was a very important drive through the 100-day campaign launched by Honorable Prime Minister Modi to reach each and every schools and Anganwadi centers. Great progress have been made, but we haven't reached 100% yet, and we hope this will continue. And finally, we insist a lot on the need to establish a robust monitoring system to identify, so the Jal Jeevan mission dashboard is really precise and specific. This is outstanding. And we hope that this can trigger a quick grievance redressal to really address the issues and ensure that those services are owned by the communities if the problems that they raise are addressed swiftly. India has established itself as a leader globally in manifesting large-scale social changes. And I believe that with the right investment, as we have for the Jal Jeevan mission and the Swachh Bharat mission, this legacy will continue. Thank you so much. Thank you, Nicholas. You brought your deep understanding to bear on your remarks. The states are the most important stakeholder in ensuring Har Ghar Jal. Water is a state subject, and the entire implementation is under the aegis of the states. We have with us Mr. G. Madhivatnan, Principal Secretary, Housing and Urban Development, Odisha. I request him to give his remarks. Thank you, ma'am. Namaskar, honorable ministers, senior officers, eminent dignitaries, and other participants present in this forum. I am humbled to get this opportunity for sharing Odisha's transformational journey in providing piped water supply to its 70 lakh people living across all its 114 cities. Until 2016-17, in the drinking water front,
Odisha was struggling with several challenges, such as poor pipe network coverage. Only about 40% of the area was having pipe network. Huge supply deficit of about 157 million liters of water on a daily basis. Intermittent supply of water, low pressure, huge disparity in supply both within the city and between the cities. Only 50% houses were having house connections. There was no metering of connections. Water losses were to the tune of about 50%. And on top of it, incidences of water contamination leading to frequent breakout of diarrhea cases, the biggest killer of children worldwide. Inspired by the revolutionary principle of national hierarchy of priorities set by Amrut 1.0, which has placed pipe water supply on saturation basis at the top of all priorities, which is non-negotiable and not breachable. Odisha began its journey to achieve 100% house connections in all the cities since 2016-17. But Amrut 1.0 covered only 9 cities, leaving behind the remaining 105 cities. To ensure inclusion of every house in every city, whether Amrut or not, we conceptualized and implemented a state counterpart scheme called Vasudha, fully funded by state. Various policy interventions coupled with large-scale infrastructure additions taken up on a mission mode made the transformation possible for us. Providing water to every household meant a wide-scale infrastructure development with an investment of about 4,000 crores, which was achieved through convergence with several schemes and about 928 projects implemented in a record time of 3 years. While the annual spending underwent a five-fold increase from rupees 200 crores to about 1,000 crores a year to meet the steep targets we set for ourselves. Our human resources within the government fold, however, remained almost the same. This called for extensive capacity building measures, including that of our local contractors. We also onboarded a large number of new contractors from other sectors like road, irrigation, building, etc. to enhance the implementation capacity to ensure time-bound completion. The creation of additional infrastructures on a massive scale has ultimately resulted in the achievement of the last mile connectivity we dream for, that is the house connections, which has increased by about 225% from 3 lakh to 9.7 lakh as of now. That is 97% of the households have already been covered across the state. Bhubaneswar has become the first million-plus city in the entire country to achieve 100% house connections in October 2020. 77 out of 114 cities have been declared to have achieved 100% house connections after third-party validation, and the remaining towns to achieve by December 2022, this year. Metering the house connections have also been taken up statewide from 0 in 2019 till now. 2.21 lakh water metering have been completed out of 9.71 connections in the last 2 years only, with an ultimate target to achieve 100% metering by 2023. Numerous enabling policy measures were introduced to achieve the universal coverage of house connections, such as the responsibility of house connection is now shifted from the consumers to the government, cut down the requirement of documents, relax most of the conditions for getting connections, no upfront connection fee for the urban poor, installment fee provision for others, etc. are some of the approaches we made. The approach adopted was basically to somehow give the connections. Jalsati is another innovative component of our mission. We inducted women from self-help groups on a performance-linked incentive framework to perform various functions like meter reading, billing, collections, facilitating new connections, grievance redressal, and overall customer relations. They also help us with on-site water quality testing and help bridge the disconnect between the citizen and the government. Upon achieving the universal coverage, we marched ahead and started Drink from Tap mission to provide 24/7 directly drinkable water from the tap, adhering to IS 10,500 quality standards. Puri city became India's first citywide 24/7 drink from tap quality water to every house in July 2021. The project deploys a smart water management system with industrial IoT and sensors embedded in the network that captures vital data, including leakages on a real-time basis for effective management. As a result, water loss in Puri has steeply declined from 47% to just 15%. Other highlights are 100% metering and over 97% revenue collection. Drink from Tap mission is now upscaled
to 17 other major cities with an investment of about 2,000 crore rupees, including the major cities of Bhubaneswar, Cuttack, Berhampur, and Rourkela, which would benefit about 40 lakh urban population of the state. The target completion date is December 2023. Several zones in Bhubaneswar, Cuttack, Berhampur are getting completed in the meanwhile. The highest level of political commitment, followed by policy reforms, community participation, and technology adoptions, have helped Odisha achieve the universal coverage of pipe water supply with the drink from tap quality. This has substantially improved the public health scenario, resulting in a steep decline of waterborne diseases by over 90% in the zero casualty. Clean drinking water for everyone is the foundation for achieving healthy people and healthy nation. And Odisha has experienced that investment in water is actually investment for public health. Thank you so much. Thanks for the opportunity. Our compliments and best wishes to Odisha and all other states and UT administrations as they work with passion and commitment towards Har Ghar Jal. Continue. Thank you, sir. This massive challenge that is before us and the nature of this challenge requires innovation, requires deep technology solutions. We have with us today one such expert, and I invite Mr. Divyanshu Kumar to share his views. Morning, and thank you so much, Honorable Minister Gajendra Singh Shekhawat, Honorable Minister of State, Madam Secretary, respected dignitaries, and all the guests present here. I feel very honored to have been given a chance to present in this webinar on Har Ghar Jal Se Nal. And I feel that this mission will benefit millions of people in the country to have water at their doorstep. As our Honorable Prime Minister mentioned today, we must focus on laying pipelines and ensure that their condition is assessed very well to achieve our mission of Har Ghar Nal Se Jal. And in this brief session, I want to talk about how we can leverage technology for quality and longevity of the pipelines. So we will be understanding products that can help us in monitoring the condition of the pipelines in a non-destructive manner so that we do not have to dig the pipelines all the time at various steps and make our assets bad. We also want to understand technologies that can support 24/7 water supply, help us detect these contamination very quickly, and achieve our target of reducing non-revenue water to less than 25%, which is currently a national average of about 45 to 50% in majority of the cities. So this is our context. As we know that the water pipeline network over the next 5 years needs to be expanded by more than 1.3 lakh kilometers. And we already have a lot of pipelines that are already laid. Now, how do we know which pipelines need to be retained versus which pipeline need to be replaced? Because every kilometer of pipelines that we can retain versus replace will help us save at least 100 times of the cost. At the same time, when we are talking about distributing water via the distribution lines to every household, we'll have a lot of distribution network. And this may result in a lot of leakages and contamination points because of various challenges that we have. So we will also need technology to essentially help us identify these leaks and contaminations, pinpoint the exact location, and resolve quickly so that we can reduce downtime. So we have explored certain technologies that can help us achieve that. One of the technologies that we have been working on is a robot that can go inside any pipeline which is above 70 mm in diameter and can give us the complete internal view of the pipeline network. For the stakeholders, it will be able to give us live inspection update on what is the condition of the pipeline, what are the leakages, are there any joints which are not joined properly, is the water contaminated, because the quality of the water is very, very essential as well. We also, over a period of time, will be able to understand the percentage of corrosion that has happened in the pipelines. We'll be able to estimate the scales. Both of these are very important parameters for us to understand whether a pipeline needs to be replaced or retained. At the same time, we can also take up certain tasks like data analysis and digital twinning so that decision makers can play around with what can happen to the pipelines if we take decisions like X, Y, Z. These things will be very critical for us to make decisions regarding contamination detection, leak detection, and condition assessment without incurring a lot of cost and damage to our current assets. In terms of the impact, for example, so far we have worked with various corporations in Chennai, Coimbatore, Bhubaneswar, Ulhasnagar, and Jamshedpur. And what we have realized is that for every kilometer of pipelines that we are able to inspect, we save about 600,000 liters of water every day. Because the certain contamination and leaks that are there, if we are able to
detect them timely and take action on them, then we'll be able to save this much amount of water, which is a critical impact parameter for us to be able to reduce the non-revenue water to less than 25%. The another impact area that we are able to see is if we are able to detect and pinpoint the exact location of our defects, we will not have to dig at multiple layers just by intuition and try to identify where the problem could be. This has a lot of digging cost and labor cost, which are also responsible for road digging and other challenges. If you would have seen a lot of roads that we have, there would be corporation barricades that would be kept and a lot of roads would be dug up. We can reduce them significantly and identify the leaks and pinpoints. It's just a matter of an hour rather than a couple of days as it used to be earlier in traditionally and manually. So we want to work towards that, and we want to see how with each of these leaks and contamination faults that we're able to identify, we can ensure that the city is able to reduce their contamination and leak detection in less than 24 hours, a critical challenge for help us achieving quality water and access to all the households through a Jal Jeevan mission. We also want to take an exercise to do a sampling of existing pipeline networks that are there to make effective decisions around whether the pipelines should be replaced or retained, thereby giving us whether better budget optimization of what decisions to be taken with the money that we have. I also suggest that pipeline inspection should be taken as a routine exercise at least every quarter for helping us predict the kind of challenges that come in and help us reduce downtime significantly so that citizens do not have to get trouble with everyday water that they receive from the municipality. And the last suggestion that I would like to make is that every city, every district should have a technology partner through which they should be able to better their resources and make data-driven decisions to be able to provide quality water and access to all the households. Thank you so much. Thank you. We've had a distinguished expert panel discuss various aspects around the issue. We also have a very distinguished participation list. And while we would have wanted to hear a large number of our participants, there is a pressure of time. I will call upon some distinguished participants who have expressed an interest in intervening. I will request them to keep their interventions brief. First, I call upon Mr. R. Mukundan, MD and CEO, Tata Chemicals. Thank you, ma'am. Firstly, let me start with Honorable Minister Shri Gajendra Shekhawat ji, who addressed us, Honorable Minister Shri Prahlad Patel ji, who also addressed us, and all the senior officials, friends and colleagues. I'm really humbled to join all of you in this webinar and have an opportunity to reflect on this important issue of Har Ghar Se Nal, Har Ghar Nal Se Jal. Access to water for life is an important SDG goal, as many have spoken, and we must jointly aspire to achieve it, even as we look to ensuring the next step, which is water for livelihood. This is a very important mission, and one thing we are very clear as an enterprise is that whenever as a nation we have taken up any issue on mission mode, we have achieved it. Just look at eradication of polio, vaccination for all, rapid upgradation of health infrastructure, which we did during COVID. All these could not have been possible without the visionary leadership, missionary execution, more importantly, a very collaborative mindset. And I'll speak very shortly about that collaborative mindset. But firstly, this program, which we have worked with the ministries and under their guidance to provide them little support, is truly a program which reaches the village level into every home of every Indian and delivers solution. It has at its heart the ownership of community, as everyone has said, at Panchayat level, with the support of block and district level leadership, and delivery is being guided by state and central government. It embraces latest human technology, which puts data at the hands of every citizen, creates transparency, and ensures high quality delivery. I just want to reflect upon what our founder, Sri Jamshedji Tata, said. Community is not just a stakeholder, but the very purpose of our existence. So we are thankful to government for this opportunity. This has helped many of our team members to experience at first hand the needs of community and approaches to enable communities by empowering them with access to clean drinking water, which leads to better health outcomes. Three broad learnings which we had. One is ownership by villages at Panchayat level is extremely critical for this program. Secondly, data-driven approach can add a multiplier effect as we deploy digital tools and digital technology,
which are simple yet powerful. And most important, our learning has been collaborative teamwork is very important between center, state, district, block level, and village level. Also, one of the things we find is administration needs to work very strongly with Pani Samitis and local self-help groups. And lastly, we have to think in this program not just of technology, but also harnessing local knowledge and also skill building at local level. We really wish this program a great success, and thank you again for having us participate in this webinar. Thank you. Thank you very much. We have another distinguished CEO and MD with us, and I invite Mr. Girish Krishnamurthy from Tata Medicals to give his views. Thank you, Madam, and elaborating further to my colleague, Mr. Mukundan. First, my salutations to honorable ministers and the senior delegates. As we feel it's a great opportunity to be part of this mission from the Tata Group. I want to allude into some of the pillars of this program because as each one of you know, this is a very large mission in a country like us with covering about 1.3 billion population, looking at every household. A sustainable model was a critical thing which was thought through by the government in a right manner. And we brought in about 5 pillars. One is to develop a very strong foundation of a guidelines and framework. The guidelines and framework in this program was very, very thoughtfully developed using ground level, field level pilots. We are fortunate to participate in about 15 pilots across about 10 states and also having a deeper understanding of how do we manage this overall large project, where the most important thing which came out, which is the source sustainability. And if you look at global level, this particular initiative has put in a best technology in place to do the source level sustainability with deeper technology of sensors and other technique. The next important thing which has happened in this project, if you look at it, which can really scale this project very fast, which is a very thought-provoking method of putting a geo-tagging method across all infrastructure at a village level, even at the lane level of every aspect of the assets. And the third aspect which we really look at in the pillar, which is the quality and the quantity, where managing the pressure to the distribution to the tank and various different methods we experience in the pilot, which is also fully driven by the technology. The fourth pillar of this particular initiative, which is very, very clearly comes out of the guidelines and framework, which is the digital governance of the program. The digital governance, which has got a multiple aspect of it, there are 3 stakeholders which has been fully thought through. One is the actual village administration itself, which everybody spoke about it. There is a JJM mobile app, which enables everybody to work on this, and all the 3 stakeholders, the administrators and the common man, as well as the local administration. And all of them are used this digital mechanism to manage it. Now, some of the learning, as Mr. Mukundan and other experts who mentioned in this, one of the things which we realized after going through the pilot in the detail at the state level, we feel the 4A model can be brought in. The awareness I feel for this project is already there more than 90% nationwide, given the visionary leadership and the major focus has been given by the central and state government on this project. More than 90% of our common man understand there is something happening. So there is a awareness is pretty much in a higher level. The next is the acceptance of this project at the state level and a district level and a block level is reasonably okay. I would say we are about 50 to 60% we have achieved there, while 50% of the country is already receiving water through this program. The third one, which is where the adoption, which my colleague spoke about it, I feel we are in a very early stage. Our Honorable Prime Minister, as he laid out this morning, probably bringing in a recognition model, competitive model at a district level, at a village level, could be a very good thought process we can do. Probably we can consider to create Ghar Jal champions. We can create kind of a champion award. And then now that we have a digital technology to monitor every level, village level performance, which is already there in the framework and guidelines, if you're able to come up with some kind of a recognition mechanism at a village level and bringing champions in the village level to make that happen, that might fast track this project, given we have a very short schedule to achieve it. And once again, from the Tata Group,
We are very, very happy to participate and will continue to work to make things happen. Thank you. Thank you so much. I now invite Mr. Rameshwar Rao, Director of the Engineering Staff College of India at Hyderabad. Respected Union Minister Jal Shakti, Shri Gajawat Singh Shakwat, and Honorable Minister States Prahalad Singh Patel, and senior officers, other participants in this webinar. Namaskar to all. I am Dr. G. Rameshwar Rao, Director, Engineering Staff College of India. Having been empaneled as key resource center by the Minister of Jal Shakti, Government of India, under Jal Jeevan mission, the ISKI is fortunate to be part of this prestigious mission to provide safe drinking water to every rural household through the functional house tap connection. We are bestowed with the responsibility of the all training the stakeholders that is L1 senior level, L2 and also L3 community level for coming 3 financial year to fulfill the vision of Government of India in building the partnership with the state governments, NGOs and other implementing agencies to work together in this prestigious Jal Jeevan mission to bring quality change in the lives of the people, especially in rural India. During the training process, we laid emphasis the enlightening all the stakeholders on the need of the supply, the clean and potable water in adequate quantity and desirable quality on regular and long-term basis. The most important with adequate pressure, so that everybody can get the water without an insufficient quantity also. So apart from this, the classroom training, the participants are also be taken on field visits to water treatment plants and pipeline laying sites and pump houses to have the exposure to various stages of construction and operation activities. They are taught the process of collecting the treating grey water from the kitchen and washrooms. Also, we train them to process the filtration, disinfection, and the transportation of water with a great precision. And this makes the trainer to implement the mission at grassroots level in sustainable manner throughout the country across every village and household. There also be explained the process to take care of the supply of potable water without contaminating the water during the transmission or distribution process, and leakages are to be controlled and also water is conserved. This is the spread the awareness among all the conservation to the entire village and habitation, and they deal with the safe drinking water and sanitation hygiene is highlighted. We are also very happy to inform all of you the response from the trainee participants is very good and positive feedback is received on such initiative of the training involved all stakeholders to ensure the community participation in this prestigious unique Jal Jeevan mission. We wish to further inform, sir, ISKI is also be empaneled as third-party quality inspection agency under Jal Jeevan mission in the states of the Chhattisgarh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. As a quality control, we are enforcing the external agency. ISKI is assisting the departments to conduct the quality control inspection by qualified and well-trained engineers to enable the achieve the quality work, all the components of the under the Jal Jeevan mission. And also we are providing the service monitoring and reporting to the progress of the work. We are very thankful to the authorities for making us the part of this mission as their training comes educated, and also the opportunity given to speak on this occasion, and assured that Engineering Staff College of India shall successfully and effectively discharge the responsibility entrusted as a key resource center, training center, the participants to active and bring the visible change in the lives of the rural India through the Jal Jeevan mission. Thank you, one and all. Thank you. TPIs are crucial going forward to ensure quality in the works, and key resource centers, of course, are a very important pillar for capacity building at all levels. We have with us another KRC, Krishi Vikas v Gramin Prashikshan Sanstha, Baldana, Maharashtra, and I invite its CEO, Mr. Amit Nafade. माननीय मंत्री जी, मैडम सेक्रेटरी और सभी डिग्नेटरीज को मेरा नमस्कार। कृषि विकास व ग्रामीण प्रशिक्षण संस्था को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में एज अ केआरसी अपॉइंट किया गया है, और अभी हम जो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने कंप्लीट किए हैं एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का जो है वाशिम, वहां पे। तो हम जब ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बताने के लिए मोबिलाइजेशन के लिए गांव में गए, जिला प्रशासन के पास गए, तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि अन्य ट्रेनिंग प्रोग्राम के जैसे ही एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लेकिन जब लोग ट्रेनिंग सेंटर में आए तब उनकी धारणा कंप्लीटली बदल गई।
और उन्हें ये महसूस हुआ कि नहीं, ये ट्रेनिंग कुछ अलग है और यहाँ कुछ सीखने को अलग से मिलने वाला है। जैसे ही मैम वहां पे विलेज एक्शन प्लान के ऊपर सेशंस हुए तो लोगों ने हमें बताया कि विलेज एक्शन प्लान कुछ गाँव का बन गया था और उन गाँव का जो विलेज एक्शन प्लान बन गया था तो लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी कि हमें अभी सही मायने में समझ में आया है कि विलेज एक्शन प्लान में कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन कितना महत्वपूर्ण है। और शायद विलेज एक्शन प्लान बनाते समय वो एक्टिव पार्टिसिपेशन उस तरह से उतना नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी अगर हम पोस्ट बजट की बात कर रहे हैं तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो भी लर्निंग्स उनको मिले हैं तो ये विलेज एक्शन प्लान अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए लोग अभी कॉन्फिडेंट है कि हम बहुत अच्छी तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ इसको अच्छा इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इसके आगे महिलाओं की काफी अच्छी संख्या थी प्रशिक्षण में, और महिलाओं को तो मतलब वो पानी समिति की सदस्य है, फिर भी ज्यादा जानकारी हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं थी मिशन के बारे में। उनको बहुत फायदा मिलने वाला है इस मिशन से। तो एटलीस्ट जो पानी समिति की महिलाएं यहाँ आई थी उनको अभी मिशन के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिली है, और हमें आशा है वो गांव जाकर अपने बाकी महिला भगिनियों के साथ भी ये जानकारी शेयर करेगी और उनका पार्टिसिपेशन भी बहुत एक्टिवली यहाँ पे हो पाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा वो है फील्ड टेस्टिंग किट के बारे में। हमने जो पार्टिसिपेंट है उनको बोला था कि आप आपके गांव से पानी का सैंपल लेके आइए, और लोगों ने सैंपल लाया और हमने फील्ड टेस्टिंग किट के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में सेशन को अलाइन करके फील्ड टेस्टिंग सैंपल्स को टेस्ट किया। तो लोगों को पता चला कि उनके गांव के पानी में क्या प्रॉब्लम्स है, उसका एनालिसिस भी हुआ और उसके ऊपर क्या उपाय करने चाहिए। तो ट्रेनिंग में जो एक डेमोन्स्ट्रेशन था उसको हम आगे लेके गए और उसको कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट प्रैक्टिकल के साथ। साथ ही जो डेमोन्स्ट्रेशन वहां पे लगाए हुए थे उससे भी लोगों को काफी अच्छा समझने में फायदा हुआ। एक इनोवेटिव थिंग्स हमने यहाँ पे करने की कोशिश की, वो है जल साक्षर मोबाइल एप्लीकेशन। हमें ये महसूस हुआ कि महज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से नहीं ज्यादा कुछ होने वाला, हमें लोगों को कंटिन्यूअस फॉलोअप करना पड़ेगा और लोगों को मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर हमने एक मोबाइल ऐप बनाया जो है जल साक्षर ऐप। माननीय विश्वकानंद सर भी आए थे मोबाइल ऐप के लॉन्चिंग में, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है लोगों से इस एप्लीकेशन के बारे में। ये व्हाट्सएप से थोड़ा सा हटके है और हमें आशा है कि इस ऐप के माध्यम से हम लोगों से फॉलोअप अच्छा कर पाएंगे, कनेक्टेड रह पाएंगे और इसका बहुत अच्छा फायदा होगा। और एक अनपेक्षित चीज जो हमें यहाँ देखने को मिली है वो है लोगों का एक दूसरे के बीच में कनेक्ट। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने कुछ ग्रुप्स बनाए थे, तो ये ग्रुप तो वैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बनाए थे, लेकिन अभी हमें पता चल रहा है ट्रेनिंग के बाद कि ये ग्रुप घर जाकर भी बहुत अच्छी तरह फंक्शन कर रहे हैं। लोग कनेक्टेड हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि अरे ये यहाँ समस्या है, ये यहाँ कैसे करना चाहिए। और मुझे लगता है ये जो ग्रुप ट्रेनिंग प्रोग्राम में फॉर्म हुए हैं ये इट विल रियली हेल्प टू ब्रिंग अ चेंज जो कम्युनिटी कनेक्ट है उसके लिए। साथ ही जिला प्रशासन के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा कि जिला प्रशासन ने खुलकर हमें बताया कि बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन में जरूर फायदा प्रशासन को भी होगा। साथ ही जिला प्रशासन ने हमें ये भी कहा कि जितने जल्द से जल्द हम पानी समितियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं उतना अच्छा रिजल्ट लाने में ये फायदेमंद हो सकता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हम ये भी आश्वस्त कर सकते हैं कि जो प्रोग्राम की सस्टेनेबिलिटी हम देख रहे हैं, जो कम्युनिटी की ओनरशिप हम देख रहे हैं, जो मेंटेनेंस हम जिसके बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है ये की रिसोर्स सेंटर के माध्यम से जो लेवल 3 के ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं और पहले जो डिग्नेटरीज बात करके गए हैं उन्होंने भी, मंत्री जी ने भी ये सब कहा था, तो ये प्रोग्राम काफी अच्छा बदलाव जमीनी स्तर पर ला सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम्स जो है, इन प्रोग्राम्स के साथ साथ कुछ फॉलोअप के लिए भी प्लान किया जाए। भारतवर्ष में जो भी KRC प्रोग्राम हुए हैं उनके साथ एक एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन रखा जाए और जहां जहां पे जो जो कुछ अच्छा हुआ है वो सब कलेक्टिव करके एक बार ये प्रोग्राम अगर रीडिजाइन होता है तो बहुत अच्छे इसके इम्पैक्ट, कुछ हमने अच्छा किया होगा, कुछ किसी ने किया होगा, तो बहुत अच्छे इम्पैक्ट इसके आ पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इस प्रोग्राम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और उसमें की रिसोर्स सेंटर्स के अलावा इम्प्लीमेंटिंग सपोर्ट एजेंसी का बहुत बड़ा रोल है। हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर कमल बहुगुना, ED हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट उत्तराखंड, जो कि इम्प्लीमेंटिंग सपोर्ट एजेंसी के रूप में जल जीवन मिशन को सहयोग दे रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि ब्रीफ में अपने विचार रखें। थैंक यू मैम। माननीय जल शक्ति मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, सचिव महोदया,
समस्त सम्मानित डिग्नेटरीज और प्रतिभागी, आप सबको मेरा प्रणाम। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट हाईफीड उत्तराखंड को जल जीवन मिशन के अंतर्गत KRC के रूप में एम्पैनल किया गया है। हाईफीड द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड के 4 जनपदों देहरादून, टिहरी, पौड़ी व उत्तरकाशी में इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी के रूप में भी कार्य किया जा रहा है। ISA के रूप में हाईफीड द्वारा प्लानिंग फेज में पर्वतीय क्षेत्रों के 184 गांवों में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है तथा VWSEs के साथ बैठकर गांव का बेसलाइन सर्वे कर विलेज एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं। अधिकांश गांव की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। इम्प्लीमेंटेशन का कार्य प्रारंभ होकर पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य गतिमान है। हाईफीड द्वारा स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन उत्तराखंड के सहयोग से जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनपद टिहरी व उत्तरकाशी के 10 विकास खंडों, ग्रामों तथा VWSEs के सदस्यों के प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं। संस्थान द्वारा अब तक 40 बैचों का प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है, जिनमें 485 VWSEs के 1652 सदस्यों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जा चुका है। VWSE सदस्यों द्वारा अपनी योजनाओं के निर्माण हेतु उक्त प्रशिक्षणों में पूरे उत्साह के साथ प्रतिभाग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के सहयोग से भी 2 बैचों का आयोजन हमारे द्वारा किया जा चुका है, जिसमें भी प्रतिभागियों की बहुत अच्छी प्रतिभागिता रही है VWSE के मेंबर्स की। जैसा कि पहाड़ों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में सभी विज्ञ हैं कि किस प्रकार की विकट परिस्थितियों में पहाड़ की महिलाओं को कई किलोमीटर दूर से पानी सर पर ढोकर लाना होता है। इसके मद्देनजर माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यापक जनहित के लिए उनके विजन व मिशन के अनुरूप संचालित जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं समस्त देश और विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं के कार्य बोझ को कम करने के लिए वरदान साबित हो रही है। जैसा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पानी के स्रोत धीरे धीरे सूख रहे हैं, अतः जल स्रोतों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि पेयजल योजनाएं लंबे समय तक सस्टेन कर सके। योजना के अंतर्गत गठित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों तथा समस्त ग्राम वासियों व विशेषकर महिलाओं द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में बढ़ चढ़कर सहभागिता की जा रही है तथा योजना निर्माण में 5% नगद योगदान भी दिया जा रहा है। कई गांवों में यह योजना मूर्त रूप ले चुकी है तथा शेष गांव में क्रियान्वयन चरण गतिमान है। ग्रामीणों के अनुसार हर घर नल हर घर जल का यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय जल शक्ति मंत्री जी व उनकी टीम के नेतृत्व व दिशा निर्देशन में भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि सीधे सीधे मानव जीवन की परम आवश्यकता को पूर्ण कर रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। I now invite Mr. Gopalakrishnan, retired Chief Engineer from Coimbatore, for his perspective. Good afternoon, honorable dignitaries. I am Gopalakrishnan. Ensuring flow from a tap in every household is a major leap forward in ensuring health and quality of life of every citizen of the country. But it is right time to ensure that the water flowing satisfies the definition of a protected water defined by CPHEO manual of Government of India. The manual defines the public protected water supply as supply of safe, clean, adequate water supplied conveniently and as economically as possible. But flow from the tap in every household, unless it is 24/7, cannot satisfy any of the criteria defined by the CPHO manual.
It leaks and ingress of the external leak water into the pipe. Water cannot be safe and clean. Adequacy cannot be ensured. Convenience is availability of water when the consumer needs. And also it is not economical also. So 24/7 is the need of the hour, with 500 towns already covered under water supply, with adequate water supply under Amrut program. It is right time that it can be converted into 24/7 by creating operational zones and adopting district metering area concepts. The present CPHU manual does not follow the DMA system and other things, and the manual is under revision. By following the systematic zoning and GIS-based hydraulic modeling, it is feasible planning and design of implementation of the 24/7 water supply. Coimbatore city has taken up their major program of providing 24/7 water supply in the project area. We have already commissioned one DMA with 1,240 house service connections, getting round-the-clock water supply for the past 6 months. Because successfully established, it is feasible to convert an intermittent system to a continuous 24/7 system. I hope the Jal Jeevan mission can take forward in achieving supplying the water as defined in the Government of India manual. Thank you, everybody. Thank you. That was fascinating. The states must have the last word because they are the key stakeholders. And so I invite now as the last intervener, Mr. Shailesh Bagoli, Secretary Urban Development, Uttarakhand. शैलेश। आदरणीय माननीय मंत्रीगण, सभी उपस्थित अधिकारीगण और सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। आई एम सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट इन उत्तराखंड. In Uttarakhand, around 37% of the total population of the state resides in the urban areas, consisting of 111 urban local bodies. The high decadal growth rate of around 40% of urban population, difficult terrain of the hill districts, scattered population, especially in the hills, and frequent natural calamities pose unique challenges in Uttarakhand in providing urban amenities to the people. In the state, around 18% of the total drinking water demand of the urban areas is met from open surface sources like rivers, 12% from surface resources like springs, and around 70% from underground water sources like tube wells. Around 68% of the urban household have access to piped water supply, with only 23% ULBs have sufficient water supply as per norms of 135 LPCD. In hilly districts, which account for around 40% of the total population, the source of water is mainly springs and rivers. Distance of these water sources from habitations, requirement of pumping water supply to households in higher reaches, damaging the water supply needs to be increased, leads to increased cost of providing piped water supply to every household. Depleting discharge in springs is a major cause of concern, and also in small rivers. Heavy industrialization in the plains regions of the state and migration to these plain regions have led to increased water demand. This water demand is met largely through tube wells, and many times private tube wells, which leads to indiscriminate use of groundwater and poses threat in terms of depleting water level. To reduce the dependence of on individual tube wells, it is imperative to provide piped water supply to every household. To meet the demand of creating drinking water infrastructure, the state of Uttarakhand is relying on various externally aided projects, along with effective utilization of Government of India schemes like Amrut 1.0 and Amrut 2.0 and the funds received from the Finance Commission. To bring down the costs, the state has also targeted to reduce non-revenue water to around 20%, which currently stands at around 40 to 50%. Recycling of treated used water to meet at least 20% of the total city water demand and 40% of the industrial water demand is also on the agenda of the state government. To reduce operation and maintenance cost, the state is also promoting the use of solar pumps, especially in the hills.
To ensure availability of sufficient water, the state government is also working towards ensuring aquifer management. This includes preparing an inventory of springs and also identifying the ones where significant depletion has taken place. These spring sheds under threat are being treated on the basis of the recommendations of the geological and hydrological study undertaken for the purpose. Similarly, initiatives are being undertaken to revive different water streams by treating their watersheds and creation of small check dams along these streams. Most importantly, the engagement of community and the local governments are key to the success of the mission of providing piped water supply to every household. Upgrading the capacity of the urban local bodies to take up the responsibility of providing water supply services needs to be a major focus area. Skilling of the local people to operate these schemes and undertake small maintenance works will help in increasing self-reliance. Creating awareness among people to conserve water and promoting recycling and reuse will go a long way in reducing costs and making water supply projects sustainable. Thank you so much. Thank you, Shailesh. We would have wanted to hear each of the over 500 participants with us today, but we will have to close this session. Nevertheless, I invite all of you who have listened in and who have your views on how to improve the implementation of Har Ghar Jal, both in rural and in urban areas of the country, to please come forward with your suggestions. Please email them to us, and we will be happy to discuss them further with you as we move in partnership with the state governments and the UT administrations, in partnership with the private companies delivering the projects in many places and delivering the pipelines and other machinery and equipment, in partnership with community organizations and all those who are supporting and building capacity in those community organizations, including those supporting the mission as KRCs, ISAs, etc. And we work as a team unitedly to achieve our mission of giving Har Ghar Jal, and the Jal to be of good quality, good quantity, regularity. And we have to ensure that while the works are going on, also there is quality in implementation. The remarks we have heard today from the experts and from the various interveners have been most useful, covering a gamut of conceptual and precise issues, all the way from how to ensure that climate change resilience is built into our thinking and our planning, to ensuring that the projects are implemented properly by having single window clearances, all kinds of issues around supporting, enabling community participation, and the nitty-gritties that the states have been dealing with in ensuring quality and speed both at the same time. So we will work towards solutions that are efficient, quick, but also sustainable, with source sustainability and with community ownership, ensuring sustained use and maintenance of the assets over time. With that, I thank each one of you. I seek your continued support, involvement, your passion, and your commitment to the cause of ensuring that our women do not need to trudge long distances for getting drinking water, and every household has clean, potable water so that the household is healthy and efficient, and we move together as a country towards ease of living and towards a better quality of life for our citizens. With that, I hand over to my colleague, the Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, for further discussions on Har Ghar Ujjwala. Thank you very much, ma'am, and it is a pleasure today to be here for this session. We have a very illustrious group of stakeholders, and I hope to benefit from the very rich experience to take up some of these issues around the increasing access to clean fuels across the country. So without further ado, let's get straight into the topic and the subject at hand. And we have a short video which we would like to, which will encapsulate really the journey so far and what's been happening, and really set the tone and the pace for the discussions. After which I'll be inviting our Honorable Minister of State,
immediately after the video, Mr. Rameshwar Teli, he'll be speaking to all of us. So if you could have the video now. 1 मई 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। देश की 8 करोड़ महिलाओं के जीवन को धुआं मुक्त करने के साथ इस योजना ने निर्माण किया एक नए, सशक्त और सेहतमंद भारत का। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पहले चरण से देश के परिवारों को मिले लाभ को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2021 में लॉन्च की उज्ज्वला योजना 2.0। उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। योजना के दूसरे चरण में विभिन्न वर्ग के उन परिवारों को 1 करोड़ नए कनेक्शन दिए गए जिन्हें पहले चरण में ये सुविधा उपलब्ध नहीं की जा सकी। इस बार प्रवासी और गैर प्रवासी परिवारों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए। नतीजा है कि आज उज्ज्वला घर के लिए सिर्फ एक गैस सिलेंडर नहीं, प्रतीक है उन माताओं और बहनों की विजय का जिन्होंने धुएं के काले बादलों के बीच सदियां गुजार दी। उज्ज्वला महिलाओं के जीवन में एक परिवर्तन की लहर लेकर आई है, जिससे उनके जीवन में महत्वपूर्ण व्यवहारिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार हुआ है। उज्ज्वला से न सिर्फ उनके स्वास्थ्य में हुआ इजाफा, समय और पैसों की बचत से उनका सशक्तिकरण भी हुआ। मुझे कोलसीना गैस एजेंसी से गैस फ्री मिला है और मैं अब हर काम सही ढंग से कर लेती हूँ और अब चूल्हा जलाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और उज्ज्वला योजना से मुझे फ्री गैस सिलेंडर मिला है और पहले मैं चूल्हे पर खाना बनाती थी तो मुझे बहुत परेशानी आती थी, उसमें धुएं से मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम भी होती थी और आंखों में जलन भी होती थी। इस वजह से मुझे और खाना बनाने में बहुत समय लगता था। अब गैस सिलेंडर आने से मेरी कई परेशानियां दूर हो गई और जल्दी खाना भी बन जाता है। मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम महिलाओं को धुएं से राहत दिलाई है। हम पहले लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब मोदी जी के तरफ से HP गैस और स्टोव मुफ्त में मिला है। मोदी जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तय समय से पहले ही इस योजना ने अपने लक्ष्य को हासिल किया और आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ हो रहा है देश का हर घर उज्ज्वला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। Our Honorable Minister of State, Shri Rameshwar Teli, to address the gathering, please. धन्यवाद। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री पंकज जैन जी, हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर जन कल्याणकारी एवं देश के विकास की गति देने वाला बजट प्रस्तुत हुआ है। देश के विकास में हमारा पेट्रोलियम मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण और वंचित परिवारों को LPG उपलब्ध कराने के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं और आगे भी इस दिशा में प्रयास जारी है। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG कवरेज 61.9% से लगभग समपूर्णता के करीब है। इसके साथ साथ उज्ज्वला योजना की जरूरतों को देखते हुए LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप का
निर्णय किया गया, जिसके 1 लाख से भी अधिक नौकरियां भी मिली है। कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त रिफिल योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 14 करोड़ से भी अधिक एलपीजी रिफिल के लिए करीब 9,700 रुपये की सहायता दी गई है। मैं आज की इस कार्यक्रम के वक्ताओं और अतिथियों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि बजट के बाद इस वेबिनार श्रृंखला से हम सबको लाभ होगा। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for sharing your thoughts and setting the tone for this. Taking forward your thoughts, sir, I think for all our stakeholders, really it is something which is useful to recap that in the first 60 years, this campaign really which we had for ensuring fuel which is affordable, accessible, and creating awareness about it. I think for, in the first 60 years of starting from the 1950s when LPG really became available, we could do about 14.5 crore of connections. And in the last 7 to 8 years, we have not just done as many, but more. We have done about 15.5 crore connections, including 9 crore under PM Ujjwala. So that really tells you the scale at which things have happened. We intend to do another 60 lakh connections in the coming month or month and a half. We expect to near saturation is what we are aiming to be looking at, and but any such success clearly creates its own sets of challenges, because there will always be isolated places where viability of gas supply sometimes becomes an issue, where distance might become an issue, or cost might become an issue. So really what should be done as we go ahead in terms of the core areas of affordability, accessibility, and increasing awareness. I think that this is where we would like to hear stakeholders to take us through the journey of experiences and learnings, and if there are any insights which they can share with us with their work in the field and what their experiences have been. So let me therefore, straight away request our first speaker, Ms. Nidhi Prabha Tiwari. She is a social development professional. If she could request her to share her views on this entire issue. While we await Nidhi Prabha Tiwari, I think the next speaker after that would be Mr. Rakesh Mishri from HPCL. We can't seem to see you at this point. Perhaps we can come back to Nidhi. Mr. Mishri, are you online, please? Rakesh Mishri. So, request the moderator to unmute Ms. Nidhi Tiwari and Mr. Rakesh Mishri. Sir, already unmuted, sir. Nidhi Okay. Prabha Tiwari already unmuted. Ma'am, Right. please speak. Nidhi ma'am, please speak.
It appears you might be having a problem at your end. We can come back to you. We can start with Mr. Rakesh Misri then. Rakesh ji, can you speak now? Can you share your thoughts? We'll come back to Nidhi after that. Mr. Misri, can you hear us? Would you like to speak? Can you share your thoughts, please? You're still muted. We can't hear you. Can the moderator please unmute Mr. Misri from HPCL? Can I come in for a minute? Can you hear me? This is Nidhi. Yes, I can. Yes, we can. Please go ahead, Nidhi. Yes. Okay, thank you. I reconnected, disconnected and joined again. Okay. Honorable Minister, Honorable Secretary, and the respected guests, I would like to begin with sharing an encounter with Fulo Devi of Darbhanga, Bihar, about 5 years back. She got an Ujjwala connection in the first round of Ujjwala, and she said a line that I still can't forget. She said, "Ab gas darwaze tak aati hai, pehle aisa hum gaon mein soch bhi nahi sakte the." Now the gas comes at our doorstep, and we could not have even imagined that happening sitting in this village. Similarly, a distributor echoed somewhat of a similar sentiment when he said, "पहले DM, SDM हमसे सिफारिश करते थे कनेक्शन दिलवाने के लिए, और अब हम घर घर जाकर कनेक्शन दे रहे हैं." So Ujjwala, particularly Ujjwala 1.0, completely transformed the LPG landscape in India. As the Secretary was saying, in terms of numbers, how the numbers have more than doubled. And we have reached, if you only look at the population numbers, we have reached more than 100% penetration, as the Minister was also saying. न सिर्फ numbers बदले हैं, culture भी बदला है. The distributors are behaving differently, and we are reaching out to the customers. And not only is it turned out to be a gas connection, LPG has become a trigger, a catalyst for women empowerment. जैसा हमने वीडियो में भी देखा, पर फिर भी कुछ छूट रहे हैं, कुछ हिस्से छूट रहे हैं जहां अभी हमारा एक्सेस नहीं है. हालांकि नंबर बहुत कम है. इसके पहले अभी हम पानी के ऊपर सुन रहे थे, उनके कंपैरिजन में हम अगर देखते हैं तो कुछ हैंडफुल डिस्ट्रिक्ट्स ही हैं जहां पर हमारे कनेक्शंस नहीं पहुंचे हैं. And when we look at those districts, these are in the remotest parts of India, parts of Northeast, some parts of Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, and very few districts in Gujarat, where the penetration is less than 50%. So what is it? Why is it that they've been left out? And when we look at the question of access, I think at this stage, we have to look at access in two parts. One is access to connection, which because of Ujjwala, we are able to give free connection where there is no upfront cost, and that enables people to access the connection immediately. Second is access to reliable refill service. The cylinder needs to be refilled at a regular interval, and one needs to have a distributor nearby providing a reliable service. Now, the number of distributors has definitely gone up significantly. Still, there are pockets where we see the refills are lower. About, if I generalize, about 50% of Ujjwala customers are somewhat of an irregular user, using 2 to 3 cylinders in a year, the bigger cylinders. So
this time, when we plan to reach out to those parts of country where the Ujjwala connections haven't reached, even when their numbers are fewer, I do think that we must look at access to refill as part of the question. When we are planning to reach them, we also think of how are we going to reach the refills to them on a regular, sustainable, economical, and even climate-friendly way. Because distances there are in the first phase, though the bulk of connections went because people simply wanted to, it was a pent-up demand. They wanted the connections, the opportunity came, they took it away. But there were pockets where the distributors went 30 kilometers, 40 kilometers, even 50 kilometers from their service area and provided the connection. Now, the distributors across the board get the same commission, whether they're serving a customer who is 2 kilometers away from their location or whether they're serving a customer who is 40 kilometers away from their location. If I had a conversation with a distributor from Orissa a few days back, and he was saying he has about 9,000 customers, 8,600 of them are Ujjwala customers. He sells about 1,500 odd refills every month. Just about meets his establishment costs and other expenses. When he thinks of increasing the refills under Ujjwala customers, the thought that comes to his mind is that my variable cost is almost same as the money that I'm going to make by selling this refill. That makes up for a distributor who's not very keen to reach out to these customers. There is some solutioning that is required for these pockets, which are remote, where the distributor cannot economically service regularly. And there are 2-3 examples that have happened in the last 2 years, which point us to some of these answers. One, the most recent one is what we tried in a tribal district in Betul in Madhya Pradesh, where about 1 lakh customers are low refill customers, meaning in the last 6 months, they had taken either no refill or 1 refill. Now, we roped in the 14 distributors of that area, and we also roped in the self-help group network of that area and offered an additional service of small loan for buying refills. The loan was 300 rupees, 300 rupees installment. You could pay back in 300 rupees. It was a 900 rupees loan, which you could pay back in 3 installments in 3 months. And when we launched this, in a period of 4 months, there were 40,000 refills. And surprisingly, this loan option was exercised by 2,000 people. So the bulk of refills came because our service for refill really went up. So some people also exercised the loan option. They took the loan. The loan was provided by the SHGs. But the key learning that we got out of this is that even in a tribal district where the distances are great, the distributor is 40 kilometers, 30 kilometers away from villages, when we work on refill access, we do get results. And even the affordability question seems to be somewhat, managed with a superior access to refills. This is a similar experience that we have had in Orissa and 5 more states, wherever when we have taken on targets for promoting refills, improvement in service of refills has delivered results. Additionally, when we have brought in actors like self-help group women or Ujjwala Didi, they have not only mobilized, they have handled grievances, they have aggregated demand, and they have led to higher refill consumption and also additional connections, wherever there was a need for it. So when at this stage, when we are now thinking of reaching the really remotest parts of the country with LPG, we must build in a thinking of how are we going to service. And we must build in a different thinking. With the same cost structure, a distributor cannot service people
which are farther off. In fact, the same actors also may not be enough. We may need more women actors, particularly from self-help groups. Even in the Northeast, there are self-help groups, women who've been given vehicles for logistical, for taking on various logistical activities. They could be roped in to be a stocking point, be LPG mechanic, and provide the more responsive service that's required at this end of these customers. And the cost of this needs to be brought in from somewhere else. Otherwise, the cost for this additional, this additional service often falls onto the consumer. So far, in all our experiments, we have had the distributor pay for this additional service. But I think a more sustainable way would be when we build in this cost, we accept this, that to service a remoter area, it is going to cost more. It may require more people. It may require higher cost since the densities are low, the customer density is low, refill demands are lower. We need to bring in that thinking. Additionally, fuel stacking or having multiple chulhas is also a reality that we see across the board in India. And so the image of having a single LPG stove in the kitchen and the person using only LPG all through the year, that kind of an image distorts the reality that we see on the ground. We must accept that clean LPG is definitely the most convenient and the most liked fuel, even by the very, very poor women. They really immediately like it. फटाफट कुकिंग होती है और बटन दबा के कुकिंग होती है, जल्दी होती है, सुविधा है. They say all of them say that. However, there are so many other requirements that a rural household has: heating, bathing water, ambient heating, cooking for cattle feed, cooking large quantities of rice, parboiled rice, which cooks for almost an hour. Sometimes people cook 4 kgs, 5 kgs of rice in one go. All those needs cannot be met by LPG. And therefore, the cooking basket mix needs to be cleaner, not just one fuel in the basket. They have a portfolio of fuels. And we needn't think that LPG is the only cleaner fuel that needs to be there. Other ministries, other initiatives can also contribute to this cooking mix. So that on the whole, Ghar Ghar Ujjwala means Swachh Jeevan, Swachh Indhan, and Indhan is LPG as well as other sources. It need not be only LPG, because that's the reality of our rural households, that they want multiple options. That gives them the security, but it also gives them, convenience and all the various kinds of things that the rural households need to do. It meets their need. One final thing that I want to say. 30 seconds more, please. Just one final thing that I want to say is that we have such a sophisticated system of DBT. We can use it creatively to target households which are near the forest, which are in the remote areas, which are not using refills regularly for various reasons, including affordability. We can really offer them customized pricing, for the want of a better word, I want to say that, and make LPG more attractive for them. Questions of behavior change will take their own time, but I don't see behavior as so much of a roadblock as access and to some extent liquidity and affordability. Thank you so much. Thank you, Nidhi. Thank you very much. HPCL, Mr. Mistry. After that, I'll be requesting Mr. Abhishek Ghar to speak. Mr. Mistry. Honorable Minister of State, PNG, respected Secretary PNG, my dear colleagues and audience, good afternoon to all of you. Sir, I will take just 5 minutes and briefly touch upon the journey of this important flagship initiative which was taken by Government of India.
and just touch upon that PMUY scheme, and even before that, because this journey started even before PMUY. And actually in 2014, a big launch was made of PAHEL scheme, which is direct benefit transfer of benefit to the individual customers' accounts. So that became a big success. So that improved the genuineness of the actual genuine customer getting the benefit of the subsidy. And that became such a large program, it came in the Guinness Book of Records as the largest program of this kind. So going forward, to address that affordability, we have also embarked upon another scheme where more than 1 crore people voluntarily opted out of the subsidy scheme. That also became the largest program of its kind, voluntary surrender of the scheme in the world. So taking that whole thing forward, and then the major flagship program which was launched, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 1, that started in 2016, and within a short span of 3 years, in fact, before that scheduled period of this scheme, in the mission mode, some 8 crore connections were released. First 5 crores and then 3 crores more to the poor families. And that became a huge success. But of course, it had its own challenges going on the way, and that brought us various learnings going forward. So some of the learnings were, how do we reach the remotest areas, as Ms. Nidhi just mentioned? Safety became another issue. How do we educate and make them aware on the safety issues? And how do we make it affordable to the general public? So all these things were taken up in the next few years, and then the journey continued. So Pradhan Mantri LPG Panchayats were launched in 2017 to take care of this education on the usage of LPG and especially safe usage of LPG. Then, sir, in 2020, for the affordability part, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was launched, where around 14 crore refills were given free, and so that the usage of LPG could be used, and this culture and habit could be brought in. And that actually has resulted in great advantages and benefits going forward, which I will just briefly touch upon going forward. And now in 2021, another 1 crore connections have been released, and going forward, another 60 lakh connections are due for launch in the next 1.5 months. So that now if we see some data, I'll just briefly touch upon the data. In 2016, when the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana started, till now we have released 9 crore connections under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, against total connections of 34.5 registered consumers. Now, against this 34.5, total rural customers today are 17.8 crore, which is more than 50% of the total customers in the country. And going by the population, but when we say customer, it's one family, one household. And actually, if we extrapolate going by the population generally, it may represent close to 60% of the actual citizens in the rural areas getting the LPG connections. So that is the improvement which has come about, sir. In 2015, our penetration level was 56%, which has gone up to close to 100% now. And of course, there are some pockets, as Nidhi mentioned, where we have still not been able to reach, and we are making all efforts to reach there. But then this has been a huge change, and that can be taken as 78% increase from 56% to almost 100% in 6 years' time. So another factor which comes in again and again is on the usage, because this issue comes up again and again, that even though accessibility is there, what is happening to the usage? Because sometimes affordability becomes an issue. So there, what has happened? Now, if we see that data, in 16-17, the per capita consumption of rural households was 1.9 cylinders per year. Now, this has reached today as 3.7, so it's almost doubled. The consumption, per capita consumption has become 3.7 cylinders a year, which actually had jumped last year to 4.4, mainly because of Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, where some 14 crore free connections were given. But the point I'm making here, sir, this is showing a regular uptrend from 1.9 to 2.9 to 3 to now 3.7. And that shows that we are generally largely moving in the right direction, but we need to do a bit more in the same direction, and some other initiatives need to be taken. Okay, 30 seconds more, please.
Yes, sir. For the affordability part, we've taken quite a few initiatives, sir, like 5 kg thing that addresses the liquidity part also of the customers. So that has helped and brought about this change. And also it has created a lot of employment, sir. Around 150,000 people, 150,000 people, direct and indirect beneficiaries are there because of this additional enablers. As Nidhi mentioned, we have enhanced the LPG distributors and then all the bottling plants. VLEs have been put there, village level entrepreneurs, common service centers, 48,000 to see that the reach is there. And additional customer conveniences have been given, sir, in terms of digital interface for refill booking, for delivery, and a genuineness of the refills, and across the counter connections, secondary connections, simplification of the processes. All these initiatives have been given. So I'm not getting into the benefits any further. Only one slide on the way forward, sir. I'll just mention, just 10 seconds. Now, additional 60 lakh connections are to be released. Then we are also working on terms of Tatkal so that we give it in some 2 hours and 4 hours time of delivery. Enrollment of more VLEs we are trying to increase so that it reaches right up to the doorstep there. And awareness campaigns and delivery infrastructure is being increased. So just one point I want to make, till we get PNG and electricity and maybe solar heating as new technologies which we are working upon, that is going to take some time, in some years. So LPG is going to remain as the choice for the rural households. So we need to see that the penetration increases more and more in that direction. Thank you so much. Request the others to please mute their mics. Some other microphones are on. Could those please be muted? Thank you. Can I now request Abhishek Ghar, who is a postdoctoral scientist at Columbia University in New York. I think he's done considerable work on this subject, and perhaps if he can share his thoughts and findings. So much for the invite. For me, Ujjwala is the gold standard and the global benchmark on how to scale up access to clean cooking in an emerging economy. I have 3 specific suggestions on the way forward. One, that we should leverage the exponential growth of digital payment platforms, also known as fintech companies, in combination with the digital infrastructure of the OMCs or the oil marketing companies. A digital LPG bank can be created. Here, beneficiaries can save over time to purchase an LPG cylinder and get automated microcredit to bridge a small deficit if needed. Number 2 is we can leverage the existing social networks within the community. When more households from a village order LPG on a given day, it reduces the per unit transportation cost. If these savings are then passed on to the consumers, beneficiaries will be motivated to encourage their neighbors to order on the same day. So more orders, more savings, more discount. So it's a win-win for everyone involved. Columbia World Projects at Columbia University, where I work, has partnered with a fintech company in Ghana to pilot such a project. 3, leverage the tremendous institutional knowledge that is already present in the system. Innovative microstrategies by OMC officials and distributors that were successful in promoting LPG access and use need to be identified and then documented as case studies. It will not only help guide future efforts to promote LPG within India, but also guide other countries who want to emulate the success of Ujjwala. It will be a remarkable manifestation of the spirit of South-South cooperation championed by the Honorable Prime Minister when the lessons from Ghar Ujjwala in India contribute to Ghar Ujjwala in partner nation in Africa. Thank you so much. Thank you, Abhishek. I think some excellent thoughts both from Nidhi and you on this, something which we need to work on further. Let me now turn also to an industry perspective other than just the OMCs. And I think 2 of the ones I'll be requesting now, because we've had these 5 kg cylinders, we've also had bigger cylinders. So both we have an LPG cylinder manufacturer and an LPG distributor. So let me turn first to Mr. Manvendra Singh. मनवेंद्र सिंह जी, अगर आप सुन सकते हैं हमें, तो अगर आप आपका माइक ऑन करवा देते हैं, आपके इसमें कुछ थॉट्स हैं, कुछ विचार हैं, आपका क्या अनुभव रहा है, इसमें कुछ सीखने को है क्या हमारे लिए इसमें? Yes, yes, sir. Thank you very much for the opportunity being given to me. I am Manvendra Singh from Bhiwadi Cylinders.
we are into manufacturing of gas cylinders and of course the exports also. Ujjwala Yojana, Prime Minister Ujjwala Yojana was an opportunity for us, and it also gave us a greater responsibility because our focus has always been on quality. So when the quantities increase, special emphasis on the quality was to be given. So to achieve this, because we were in the knowledge that these cylinders are going into the households where the level of awareness is not that much about the safety. Therefore, to assure that a safe cylinder is delivered, we undertook a few steps in our factories where we ensured that we increase the training of our people, especially the quality control staff and the motivation level of the people, because nearly double the quantities were being picked up by the OMCs. Second thing was that we also started assuring that our inward inspection was done in a very stringent manner rather than doing it after the manufacture of the product of the cylinder. So that was ensuring that the right kind of material is going into the production, and the sources from where we were taking these materials, raw materials, were also vetted and verified from their past records. The last thing what we did was that there is a minimum level of checking in industry which is prescribed by the standards or scheme of testing and inspection. We try to increase the frequency of checking so that there is no way a cylinder escapes the quality checking. So that was our take of this Ujjwala scheme of delivering safe cylinders to the kitchens where our mothers, daughters, sisters are cooking, and which was bringing happiness to the society and to the families at large. So we were a part of that happiness which was delivered to the kitchens in India. And we are thankful to the vision of Honorable Prime Minister and the ministers, the ministry and the officials of OMCs to having been given us an opportunity to be part of this thing, to have delivered this happiness to the kitchens. And we sincerely thank all of them for this opportunity or this continued effort which is going on even now. Thank you so much. Thank you very much, Manvendra Singh ji. We also now have a LPG distributor. स्वतंत्र कुमार जी, अगर आप हैं और आप अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे, anything you would like to say? आप यूपी में डिस्ट्रीब्यूटर हैं LPG के. अरे मंत्री जी और अन्य सभी को मेरा नमस्कार। सर, मेरा नाम स्वतंत्र कुमार है। मैं स्वतंत्र प्रवासी इंडियन ग्रामीण वितरक प्रवासी जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश का प्रोप्राइटर हूँ। उज्ज्वला स्कीम शुरू होने से पहले सर हमारे यहाँ लगभग 2000 कस्टमर थे और मेरी मंथली की सेलिंग सर उसमें लगभग 1200 हुई थी। उज्ज्वला स्कीम जब सर लॉन्च हुई तो मैंने उसमें करीब 3 लड़कों को लगाया अलग से, जो जाके डोर डोर फॉर्म कलेक्ट करते थे और कैंपेनिंग करते थे। वर्तमान में सर हमारे पास लगभग 12,500 कस्टमर हैं, जिसमें से 7,500 कस्टमर उज्ज्वला के ही हैं और वर्तमान में सर मंथली फिलिंग 6,000 सिलेंडर पर मंथ की है। तो उज्ज्वला से हमारे बिजनेस में काफी ग्रोथ हुआ है सर। और ग्राहकों के लिए सर समय समय पर हम लोग एलपीजी पंचायत और सेफ्टी क्लिनिक करते रहते हैं ताकि उनके लिए यूज के लिए झिझक जो दूर हो और झिझक दूर हो जाती है और क्या कहते हैं उसको। और वर्तमान 5,500 कस्टमर होने के बावजूद भी अभी तक हमारे यहाँ कोई भी गैस दुर्घटना नहीं हुई है वर्तमान स्थिति तक। मैं अपने ग्राहकों से सर समय समय बात करता रहता हूँ और उनसे बातचीत करने पता चलता है कि उनका जो कंज्यूमर है उनके यहाँ उज्ज्वला कनेक्शन मिल जाने के बाद उनके जीवन स्तर में काफी सुधार आया है। उनका काफी टाइम बचता है और जो कि घर में धूल से मुक्ति मिली है तो उनके स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और इससे ये होता है सर कि सामाजिक परिवर्तन भी हुआ है और महिला सशक्तिकरण भी हुआ है। तो इस सामाजिक परिवर्तन स्थिति में हमको भी प्रतिभागी बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुधम कुमार जी, आपके एरिया में क्या आपको लगता है कि कुछ अभी भी ऐसे परिवार हैं या ऐसे घर हैं जहां उज्ज्वला की पहुंच अभी बाकी है,
या आपको लगता है कि आप लगभग जितने घर थे पूरे कर चुके हैं? सर हमने अपनी जानकारी में तो लगभग सभी घरों को टच कर लिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। We have about 5-7 minutes before I sum this up. If there are any other persons on this call who would like to either raise any questions or give any suggestions, there could be consumers or there could be other people who have been watching this area. We'd be happy to take any questions or any suggestions. किसी के इस अगले 5 मिनट में कोई सुझाव या प्रश्न है तो हम उन्हें सहर्ष स्वीकार करना चाहेंगे। रिप्लाई कब तक है? इसी के बीच से in which case we have also with us from BPCL. Do we have Mr. Santosh Kumar? Is he online? Would he like to share anything? Yeah, sir. Good afternoon, sir. Respected Honorable Minister of State from MOPNG, respected Secretary, sir, MOPNG, all the panel members and all dear friends on this webinar. In fact, most of the things have been spoken. I just wanted to bring 2-3 very quick points, which has been touched by Nidhi as well as Misri sir also. Sir, the biggest challenge which we faced there was twofold, and I think I will like to go into the root cause for that. Root cause for all the issues which was prevailing at the time of a start of Ujjwala, and to some extent even today, like distribution, affordability, accessibility, awareness. This was all because LPG was seen and visualized as urban product for well-to-do families and all. We had never, as oil industry, it was never in our focus to take this to rural consumers because we could not think of that. So thanks a lot to the vision of the government that they made us go towards the rural area, which has 70% of close to 70% of nation's population, and that opened a huge opportunity for all of us to, in fact, increase our market share. So today, LPG has become a product of poor and rural India, and that's a realization which we all have got, and now we have started acting on that. So the issues like accessibility or affordability part, of course, we have limited role to play other than taking help of some NGOs or self-help groups, and like that we are experimenting in Betul, what Nidhi said and all. We are also working in other parts of MP with state self-help group team, and we are seeing some good success there. Only question which remains is whether we can spread it across, and will it be able to stand on its own. हमारा recognition survey sorry, sir. So what I was saying, sir, the other part is the accessibility, which means that when the customer or consumer needs it, he gets it at the quickest possible time. With the current structure of distributorship, it will not be possible to reach that stage because the 5,000 odd distributors whom we have inducted after Ujjwala, most of them have not reached the viability limit, and it's unlikely that they will reach. So the only answer, and what Nidhi was also saying, because of the same price for delivery, it will not be feasible for them to serve the customers who are far flung and in remote area. So the need of the hour is, sir, that we think of micro distributorship attached to a particular distributor who will take care of the instant and urgent requirement of the customer at the quickest possible time. So in other words, sir, it should be available. Micro distributorship should be available in every village or at least cluster of 2-3 villages. So we are working on that, sir, and I think policy support also will be very helpful in that regard. That's all I wanted to add. So thank you very much. Very much.
Santoshji, I think within the short span of about half an hour, 40 minutes, we've had some very useful suggestions, and I'll just take the liberty of summing up some of these points. Now, clearly, the LPG market also, the supply market is pivoted very significantly to rural areas. And therefore, our solutions cannot be copy paste from what they used to be in urban areas. This is going to require some new solutions, and some of the suggestions around a digital LPG bank, for instance, in a sense, which also resonates what Nidhi was saying about loans for buying refills. I think that's an idea which definitely should be worked on. And demand aggregation, again, there is a challenge here, because with demand aggregation, we are trying to get benefits passed on to customers, but there's a tension here in terms of also ensuring viability for more and more distributors. Typically, concessions or savings which arise, it is the distributor which may be eyeing it, as well as the customer who's eyeing it. So if they're both going to eye it, how do we work that out? So whether the idea should be 5 kg cylinders or it should be micro distributors, I think that we need to flesh out some of those ideas and see what works better. But I take the point that aggregation delivers savings, and those need to be captured. I think the idea of utilizing SHGs much more, both in terms of through mobility as well as LPG mechanics, is important. Similarly, recognition of the fact that multiple stacking or multiple chulas are a reality, and we will probably have to look at other cleaner fuels operating in tandem with LPG in areas which are difficult to reach. So for instance, if it's an electric stove, because we also have electricity reaching out everywhere, or we are going to look at stoves which can allow for long cooking times wherever the food item which is being cooked needs that. I think that also will have to be worked on. Again, the idea on capturing institutional learnings, I think is a very welcome point. The point's well taken. We need to develop a way of capturing some of the nuances. And clearly, some of the things which did also come out in our discussions are, and something which we tend to ignore, is the investments in the supply chain by different players. It's not just the distribution part. We've tended to focus a lot on the distribution, but I think it was a good reminder to say that, look, if the demand is going to double, then you're going to need quality metal manufacturer, you are going to need quality factories, you're going to need factories to up their game. I think all that is something which we should capture in our learnings. So I think if there is, so I thought some of these points have been very useful. We will try and bring these out when we move to the plenary session again, the full group subsequently, to get a flavor really of some of the deliberations today. So if there is, nobody has any other burning issue to raise, I think we can wind this up, and I would like to thank all of you for having joined in. We will resume the main session at 2 o'clock, and I would welcome you to join for that. Thank you. Just to add, the main session will resume at 2:30. We've just heard that it will resume at 2:30. Okay, thank you, ma'am. Thank you very much. Thanks a lot.